Why Abhay Deol? Like I wanna ask you that. Okay, I have a theory. आज हाई जाए हाँ. And मैंने उसको DMs में बहुत love letters लिखे हुए हैं. So one day when I get verified, he will actually see that very clearly. Is it possible at all? Can we have like a glimpse of कि क्या letter था like For ever? sure. Let's fucking go. Hi, I know this is really stupid, but I love you so much. Why am I creep? Lol. Hi, Abhay, please reply to me. I'm getting some peer pressure. Okay, bye, love you. मैंने ना अभी अपने गूगल कीप्स पे ना एक मैंने जोक सर्च करा था शो पे करने के लिए. मैं बहुत दिनों पहले एक जोक लिखा था. इट्स सच अ बैड जोक बट इसकी टाइटल है जोक अबाउट सुसाइड. ठीक है. एंड द जोक बेसिकली इज माई फ्रेंड वॉन्टेड टू डाई. बेसिकली ही वॉन्टेड लाइक सुसाइड. एंड मैं सोच रहा था कि मैं उसके फ्यूनरल पे क्या पहनूंगा. अबे यार वहाँ फिर बिहानी नहीं आने वाला. वहाँ साला वो देख रहा है आपको. भाई यार वैसे isn't it the thing मतलब कभी कभी सोचा है जैसे if like you know how dadis now usually जैसे मेरी दादी है ना like she just usually just throws this around कि मैं कितने दिन बचे हैं मेरे को मैं तो जाने वाली हूँ. and I'm like chill दादी come on don't अभी आपकी सेंचुरी होनी है टेंशन मत लो आप. हाँ please. So that's fucking weird. Anyway guys, welcome to the Chashmish podcast. Let's roll into the introduction. The Chashmish podcast. Hello everybody. Welcome to the Chashmish podcast. I'm here with Himani, Khatri and Anmol and मेरा नाम है शिवम. क्या हाल हैं आप सबके? अनमोल how are you? Himani how are you? कैसे हैं आप दोनों? Very good. Very good. कैसे चल रहा है आपका वीक? कैसे चल रहा Very है? good. बस एकदम परफेक्ट. बस खत्म ही हुआ है अभी. कल शुरू होगा दोबारा. कल वापस वही मंडे से मजदूरी शुरू. अच्छा ये तो थर्सडे का था. आई एम श्योर लोगों को पता हम संडे को रिकॉर्ड करते हैं. चलो ठीक है. अनमोल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई वांट टू टेल यू हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट आई है सृष्टि गर्ग जो कि थोड़ी देर में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मैं आपसे आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील करना चाहता हूँ जो कि मेरे को अनमोल ने अभी भी बताई है कि वो कल अपने दोस्त से नंगा हुआ था. व्हाट हैपेंड अनमोल? क्या ऐसा क्या करना पड़ गया देखो? आर यू मेकिंग एन ओनलीफैंस? बताता हूँ लाइक फाइनली क्या हो रहा है जो हम सब वेट कर रहे थे जिस चीज का. मेरे कौन ही पैसे देगा इस शरीर के यार. रहने दे. नहीं आई एम श्योर कोई तो दे देगा. इतना भी ऐसा मत समझ यार. हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ था. तो हमारे मम्मी पापा देंगे दिल्ली. पता क्यों? कुछ तो करे लड़का. यार सपोर्ट कर रहे हैं अपने बेटे को. सपोर्ट करते हैं उसके ओनली फैन के करियर में. बताओ. नहीं पर हुआ क्या था कि हमारा ग्रुप था 8 लॉन्डो का ग्रुप था. ठीक है. हमने होटल के कमरे बुक किए थे 3. सो 3 कमरे सिर्फ नाम के होते ताकि एंट्री हो जाए. बस हम सारे एक ही कमरे में बैठ के तमाशा करते हैं. चिल. कोई उस कल वाले दिन सैटरडे वीकेंड कोई पूरा होटल नहीं सोया. कोई नहीं सोया होटल में क्योंकि हम थे वहाँ पे. ये कौन सा होटल था? ये वेस्ट एंड इन यहाँ पे गुड़गांव में वेस्ट एंड इन. अगर आपको पता हो 8 लॉन्डो को देख ही 8 लॉन्डो को उन्होंने 3 कमरे दिए. नहीं 8 लॉन्डो को 3 कमरे दिए हैं. ठीक है. 3. ठीक है. एक बंदा नहीं आया था ऑब्वियसली उसकी बीटी होगी. तो हम सब ने हाउ इज दैट ऑब्वियस अनमोल? हमको थोड़ी ना पता कि उसकी बीटी होगी कि ऑब्वियसली नहीं आएगा वो. नहीं हमारा एक क्यों नहीं हर एक ग्रुप में एक चूतिया होता है जो आखिर जिसकी बीटी हो जाती है. यार मम्मी नहीं मान रही. हाँ तो फिर उसकी वही बकचोदी. हम उसको भाड़ में जा बहन के लोड़े कोई बात नहीं आगे बढ़. ठीक है. तो हम 8 थे. ठीक है. फिर हमने जेमसन खोली सबने एक मारे सब. तो हमेशा ये होता है कि फर्स्ट पैग हमेशा दुश्मनों के साथ मारते हैं. हमेशा 2 पैग मारने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम. 2 पैग होने ही होने. ये क्या रूल है भाई? ये रूल है. हर किसी का. ये दिल्ली के ये मैंने लिटरली भाई क्लब्स में जाके मेरे को ये बारटेंडर से बोलता है. दिल्ली के राजा महाराजाओं के कोई सपूत हैं ये सारे जिन्होंने ये रूल फॉरवर्ड हुए हैं? हम ये क्लब से सीखते हैं. मैं पहले एनिमीज ढूंढूंगा भाई दारू पीने से पहले कि भाई मेरे को पहले एक एनिमी के साथ मारना है. तो फिर तो एक तुम भंड हो गए हो. सारे दुश्मनों के साथ पीते पता चला तुम उल्टियां कर रहे हो. कितने दुश्मन पाल रहे हो. अभी वहीं तो पहुंच रहे हैं. हिमानी रुक जाओ एक सेकंड. वहीं तो पहुंच रहे हैं. अरे वहीं पहुंच रहे हैं धीरे. तो हमेशा पहला पैक बोलते भाई चूतिया हो गया क्या? पहला पैक कभी नहीं. एक पैक मारते दुश्मनों के साथ एटलीस्ट 2 पैक. फिर 2 पैक जैसे हुए अब 2 हो गई. एक मिनट व्हेन यू से दुश्मनों के साथ व्हाट डू यू मीन? अब तुम चारों 8 लोग दोस्त हो
तो फिर ये हाँ, तो दुश्मन हमेशा कहाँ से ना आया? ये वो एक बंदा नहीं कहते कि भाई नहीं यार मेरा मैं बस एक ही पैक पीऊंगा, एक हाँ, ही पैक, तो एक उसको नहीं पी मोटिव सकता बेसिकली वो। बेसिकली तू एक नहीं पी सकता, तू 2 पिएगा, क्योंकि हाँ, एक पैक minimum दुश्मनों के 2 साथ पीनी पीते हैं। तू पड़ेगी। दुश्मन है हाँ। मेरा, तू भाई है मेरा, फिर उसका तू भाई बन जाता है। भाई के हाँ, बाद okay. प्यार हो अच्छा। जाता है, प्यार के बाद गीली पप्पियां होती है, ठीक है, चेहरे पे, ठीक है, फिर और धीरे फिर धीरे नंगे हो कपड़े, जाते हैं लोग। फिर हाँ, फिर हमारा वो फिर आएंगे मेरे को वहां तक कल- पहुंचेंगे। फिर उसके बाद सबने मारे 2-2 पैक, फिर सबको ना गले से उतरना शुरू होगी वो, कड़वी लगना बंद, ठीक है। मैं कब 2 पी लिया तो 3 ठीक, ठीक है, 3 खींच लो, से खींच 4, लो। 4 से 5, फिर गाने तेज होना शुरू हुए, ठीक है, गाने लगे करण औजला के, ठीक है, ओ पूरा भाई। होटल का स्टाफ, पूरा होटल का स्टाफ भाई साहब हिल गया, ये क्या हो रहा है, कोई चुप कराने नहीं आया, कोई बंदा चुप नहीं कराने आया, इतनी कंप्लेंट हुई है, हमारे सामने की बात है, 2 कपल हमारे सामने, यार ये कौन है यार, ये बैचलर्स को कौन घुसेड़ता है यार, यहाँ पे 3 लौंडे यहाँ पे इतना शोर मचा रहे हैं, 3 कमरों में, क्या कर रहे हो यार तुम, को बोलो, कुछ बोलो, हम आते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, सर आपको कुछ खाना है, खाने में कुछ चाहिए, नहीं हमको Bro, कुछ ये नहीं बुली चाहिए, कर फ्री रहे में दे हैं रहे थे, फ्री में दे रहे थे। होटल हाँ। स्टाफ को बुली कर रहे हैं यार, ले बैठ के लेते यार। यार। नहीं हमने पैसे दे रखे थे ना, कि हमने कहा भाई देख, हमने एक वाटर को वो सॉरी वेटर को Water हमने को। हमने वेटर को 500 रुपए दिए थे, कुछ चाहिए तो हमको लाके देगा, ठीक है, पानी हो, आइस क्यूब्स हो, ग्लास हो, यार वैसे कुछ हिमानी भी, एक तो बात हमको होती है, लाके दिल्ली देगा। वाले हैं जो हर जगह पे ना, मतलब 500 रुपए का वेटर तो ढूंढ ही मतलब लेते मेरे को हैं। यकीन नहीं हो रहा कि ये वेस्ट इन 5 स्टार के अंदर ये नहीं सब नहीं activity वेस्ट चल रही इन है। नहीं, वेस्ट इन, हाँ मेरे को लग ही रहा था आपको वेस्ट इन लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, नहीं ये नहीं, कुछ और है। वेस्ट Oh my fuck. एंड इन, अच्छा ये कुछ ओह माय Oh, गॉड, shit, मैं bro. सोच रही हूँ वेस्टर्न मैं भी में imagine वही कर ये रहा हूँ यार, कि कैसे वेस्टर्न में तो मैं पैसे गया दे हूँ, रहे हैं। हाँ। नहीं 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 नहीं, वेस्ट इन का वो कॉपी नहीं होती, कॉपी हाँ। जैसे Oh नाइकी my का निका होता है God. वही, अच्छा। ठीक है, कॉपी था Gotcha, तो वहाँ क्योंकि gotcha. इससे पहले मैं एक क्वेश्चन मुझे मिलती कि भाई कितने रहीस हो तुम लोग, कि तुम लोगों ने 3 रूम बुक करे वेस्टर्न नहीं, में और मैं फिर तो ये एक ही में सोच रहा था पार्टी कि करी 5 वेस्टर्न का वेटर 500 में मान गया, मतलब मैं पहले तो ये पूछने 500 वाला था मैं। भाई वेटर पैसा ले ही नहीं सकता वेस्टर्न में हाँ यार, नहीं ले मतलब- सकता, हाँ वो 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी है वो भाई, हाँ। नहीं, वहाँ पे बिल्कुल टिप्स वहाँ पे लेते कुछ हैं, कर ऐसा नहीं सकते है, हैं। टिप्स मतलब मैंने दिए हुए हैं पैसे बट ऐसे। वो फ्री टिप्स खाना लेते हैं, नहीं पर दे रिश्वत देगा। थोड़ी ना लेते हैं, रिश्वत हाँ भी ले खाना सकते थोड़ी दे देगा, हाँ, उसके that's बाद true, ले that's लो। वही ले सकते। हाँ, फिर मैं फिर सिंपल अनमोल बात ये थी, फिर उसके बाद 5 पैक हो गए डाउन, फिर लग गए अरिजीत सिंह, करण औजला से अरिजीत सिंह, ठीक है, सीधा स्विच मारा हमने, ठीक है, करण औजला से अरिजीत सिंह, फिर सब अपने एक्सो को पता नहीं किस बात का दुख है, सबको पता नहीं, एक बंदा है जो अभी तक वर्जन है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो तक रो रहा है, भाई तू क्यों रो रहा है, क्या? बोलता भाई रो रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं वर्जन हूँ भाई, क्लियरली ठीक है, मैं कहा चल पॉइंट है, तू रो। फिर उसके बाद पता नहीं कौन से इन्होंने नया रूल निकाला कि भाई 10 पैक के बाद सबकी टी शर्टें उतरेंगी। मैं क्यों? तुम लोगों मतलब ने 1 सेकंड, ये कौन हाँ, किसने हाँ, निकाला ये रूल? इस 10 पर्सन पता नहीं, ये मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, ये याद मेरे को नहीं है, पता। ये अनमोल का ही था ये रूल, कब गाइस, रूल- जस्ट सो रूल- यू एवरीबॉडी नहीं, नोस। नहीं, ये कब, ये जहाँ ये रूल बन रहे थे, जब ये मीटिंग हो रही थी कि 10 पैक के बाद, ये मैं क्यों नहीं था उस मीटिंग में, मेरे को पता लगाना है, ठीक है, तो कहते 10 पैक के बाद सबकी टी शर्ट उतरेंगी और 15 पैक के बाद सबका नीचे का निकरे। मैं कहा भाई ओए सॉरी मैं कुछ भी नहीं। एंड दिस इज I'm- निकर 15 विद पैक तक कैसे विद पहुंच एन सकते हो? अंडरवेयर। This is so पहली बात तो impossible. 15 नहीं, पैक्स तक तुम जा रहे हो, दैट इज लाइक, हाँ इट्स लाइक इट इज अरे? इम्पॉसिबल। 15 पैक तुम मर जाओगे। भाई कैसे मैंने मिल जाओगे जेमसन में आप? तुम 30 ml क्या तुम कितना तुम ड्रॉपर से डाल रहे हो क्या जेम्स? नहीं जेमसन यार इतनी से भरते हैं, पानी भरते हैं। अरे नहीं हम तो यार नहीं, एटलीस्ट 10 पैक तो सब हर कोई पी सकता है हमारे ग्रुप में से, 10 पैक तो मिनिमम है भाई। अच्छा आई एम रियली डाउटिंग दिस आई एम शिट, एक्चुअली but आई whatever. कांट डू हाँ, दैट। but मैं अपनी टॉलरेंस को बताऊं, अगर जितनी मैंने यार, कभी हाँ, दारू पी मैं है, भी नहीं कर जितनी सकती, मैंने देखो। लिटरली कितनी पी नहीं है, बट 2 पैक से ऊपर आई डोंट थिंक 3 से ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ कभी भी। एंड दिस इज लाइक, भाई मैं तो बता रही मैं हूँ तो तुम्हें, सिर्फ सोशली जब कोई बस- बड़ी पार्टी होती है, कोई कल्चरल इवेंट होता है, क्रिसमस पे, साहब। ड्रिंक सम वाइन, मेरे उसमें हो जाता है, कोई डिफरेंट ओ शिट क्या हो रहा है, बट मैं ओ भाई 15 पैक दरिंदे हैं? हैं। हम दरिंदे हैं, हम भाई दरिंदे हैं। भाई Literally बता रहा हूँ, दरिंदों से मजाक ज्यादा हट मुझे के। लग रहा है कि तुम नकली खरीद रहे हो आजकल। दिल्ली और गोवा में जेमसन नकली नहीं मिल रही है। यार, जेमसन एलवन से खरीदिए, कभी नकली नहीं होगी। 2000 की नहीं, खरीदिए क्या? एलवान पे ही नकली मिल रही है एक्चुअली। नहीं दिस इज नहीं गुड वन। यार, ये बहुत उसका शोरूम प्राइस, उसका यार उसका ब्रांड है एलवन का, तो ब्रांड वो कभी नकली नहीं बेच सकता जेमसन। वो ठर्रे होते हैं, ठर्रे अलग होते हैं,
ठीक है, वो अलग होते हैं। जेमसन की बोतल में कुछ और, कोई 2000 की बोतल कभी नकली नहीं होती। जब ब्लैक लेबल में नकली बिक रहा है अनमोल, तो नहीं जेमसन यार, क्या है? हम पता करते हैं, हमको पी के अच्छा, पता but चल जाती है anyway, कि what नकली happened? What है कि happened नहीं। after that? What happened after that? उसके फिर- बाद हाँ। 10 पैग हुए, फिर शर्ट ही पता उतर नहीं गई। कहाँ से किसकी मेजोरिटी हुई भाई, सब ने टी शर्ट, जैसे ही बोला टी शर्ट उतरी, एक लौंडे ने उसी टाइम टी शर्ट उतारी, जिसने बोला उसको देख के दूसरे ने उठा ली, दूसरे ने तीसरे ने। मैं कहा बहन क्या कर रहे हो तुम? Okay. नाचेगा। मैं कहा क्यों नाचेगा? फिर उसके बाद सब एक एक करके सब ने टी शर्ट उतारी, फिर मेरी टी शर्ट आखिर में सालों ने कुत्तों ने फाड़ी दी, लास्ट में ऐसे पकड़ के नीचे से फाड़ी। Oh बस, फिर shit, उसके बाद bro. सब लाए। फिर उसके बाद 15 पैक तक तो कोई पिया है, कोई 15 बाकी पैक- अगर 15 तू पैक तक चाहता कोई पहुंचा है नहीं। हम बाकी क्या नाम है एपिसोड वी कैन हैव अ प्राइवेट एपिसोड ओनली फैंस के लिए स्पेशल, इफ यू वांट टू टेल आगे क्या हुआ। वी आर आई एम कुछ नहीं हुआ, ऑल आगे- इयर्स सुनना चाहता हूं मैं क्या हो रहा आगे है। आगे 12 पैक के बाद एक बंदे ने अपने एक्स को कॉल किया, एक सेकंड, हाँ, एक बंदे ने अपने एक्स को कॉल किया 12 पैक के बाद, फिर सीधा सब लुढ़क गए सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे सब सो गए, खत्म। Simple and ओह short. शिट, कोई भी 15 पैक तक पहुंचा So नहीं, cute. क्योंकि एक दूसरे नीचे के का साथ? उतर जाता है ना, क्योंकि हाँ कडल करके तो सोते हैं तुमने सब। माय गॉड शर्टें उतार के? दैट इज सो हाँ, क्यूट। एक के ऊपर एक चढ़े होते, मैं अलग कमरे में था। ऐसी था, ऐसी होता है यार। आप कभी बॉयज अनमोल, यहाँ नाइट पे आउट अपने आप को इतना क्लीन आने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन नहीं यार, कैसे मैं आपको 10 पैक वाली स्टोरी सही में अच्छी है, वो अच्छी कह रहा हूँ, सॉरी, सही में सच्चा है, क्योंकि हम 10 पैक तक पीते ही पीते हैं। आप पता नहीं क्यों, मेरे को पहले विश्वास नहीं होता कि आप 2 पैक बस, मतलब शिवम से 2 पैक। तेरे को क्या लगता मेरे को है नहीं पता भाई, था। नशेड़ी थोड़ी ना ब्रो मैं कोई भाई भाई हम थोड़ी ना Chillax नशेड़ी हैं, scenes है हम bro. बस ओनली वीकेंड्स करते हैं। पर हमको लगा था यार मैं आपसे टिप लूंगा, मैं मतलब मैं हिमानी से पूछूंगा कि डालते कैसे हैं, पैक कैसे बनाते हैं ये, कि 2 मतलब पता नहीं, तुम बहुत गलत बना रहे हो। हाँ, तुम जो तुम भी बना ठीक रहे नहीं हो, बना रहे हो। guys। हाँ। आराम से नहीं, बात करेंगे बात अनमोल इस करो, बारे नहीं बना में। रहे। मेरे हाँ, मम्मी भी आराम देख से रही है बात पॉडकास्ट, ठीक है। बट एक उससे याद है, तूने वेटर ये बात बताई थी ना, मैं और अनमोल कुछ दिनों पहले मीटिंग कर रहे थे और मतलब एनालिसिस वगैरह कर रहे थे शो का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड हमने ना रैंडमली बात करते करते हमारे दिमाग में आया कि यार मम्मियाँ जो होती हैं दे ट्रीट देयर सन्स एज वेटर्स शादियों में। शादियों में जाके भाई हमेशा, हैव यू गाइस नोटिस दिस, मतलब तेरे साथ हुआ अनमोल कभी ये? मतलब हमने तो बात करी है बट तेरे हुआ ही है भाई। और हर चीज, और मम्मियों को, पापाओं को स्पेशली भाई हर शादी में कॉफी पीनी है। वैसे नहीं पियेंगे कॉफी, मेरे पापा कभी कॉफी नहीं पीते, कभी भी उनको ऑप्शन हो चाय कॉफी चाय, लेकिन चाय। शादी की कॉफी ये लेवल। शादी और उसके वो जो ऊपर जो पाउडर डलता है ना, पाउडर पाउडर डलता है ऊपर ओए भाई, होए। भाई वो वो तो चाहिए सबसे जिंदगी बढ़िया, में। वो सबसे बढ़िया। हिमानी जब आप शादी में आते हो, व्हाट डू यू डू शादी में एज अ गर्ल? एज अ गर्ल मैं शादी में क्या करती हूँ यार, मुझे पता नहीं। मतलब मैं तो खाने में कंसंट्रेट करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। You don't look at जितना हो boys सके or उतना anything? पेलना है मुझे एक्चुअली। I mean, okay, Thank you so much, not Abhay. anymore, but like before you were married and shit. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यार पता नहीं, हाँ मतलब समटाइम्स, बट लाइक आई डोंट नो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादियों में ना, मतलब दिल्ली के लड़के मुझे समझ नहीं आते शादियों में, तो आई एम लाइक प्लीज नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर कहीं बाहर की शादी हो तो ठीक है, फिर भी समझ आता है, बट दिल्ली में नहीं हो पाता। Regionalist दिल्ली हो में आप। बहुत ज्यादा, सॉरी हाँ मैं रीजनलिस्ट हूँ, रीजनलिस्ट हूँ मैं। फिर वो दिल्ली के लड़के थोड़ी सी दारू पीने के बाद खुद ही शर्ट फाड़ने लग जाते हैं। ये बात तो सच है। एक दूसरे एंड की वेरी फाड़ रहे सॉरी हैं से, मेरा भाई, लहंगा बहुत महंगा है, 10 पैकों में तो भाई मैं शर्ट वो फाड़ अफोर्ड रहे नहीं हैं। कर पाऊंगी। हाँ तो नहीं, मतलब नहीं। गाइस चलो भाई ठीक है। नाउ बहुत जो आगे का एपिसोड आने वाला है बहुत लंबा एपिसोड है गाइस, लिसन टू दैट। सृष्टि के साथ है, इट विल स्टार्ट लाइक, इट वॉन्ट स्टार्ट स्लो, हमने शुरू से ही वो रखा है, मतलब बहुत सही पेसिंग रही है आई थिंक एपिसोड की, बट it gets fun and fun and fun and fun the more you listen to it. And end में हमने सृष्टि के साथ 2 गेम्स खेली हैं, she is a 10 but ये वाली, एंड ऑल्सो जेन जी वर्ड जो कि हम पहले खेलते थे, एंड आवर OG फैंस जो बहुत पहले से पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको पता होगा जेन जी वाला क्या होता है। गाइज गो फॉलो सृष्टि गर्ग, हमने लास्ट में उसके ट्विटर का एंड इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है। गो फॉलो द चश्मिश पॉडकास्ट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट टू आवर यूट्यूब और आवर इंस्टाग्राम, इट इज़ 2 चश्मिश podcast. That's it. Very normal, very bougie. And guys also like, share and subscribe obviously. ठीक है एपिसोड सुनने के बाद, क्योंकि मैंने एंड में नहीं बोला अनमोल ने। दैट्स इट गाइस, जाओ अब एपिसोड स्टार्ट होने वाला है, सुनो। टुडे वी हैव विद अस अ सिंगर, एन एक्टर, अ मॉडल, अ डांसर, basically a future Bollywood star, but currently a celebrity with us today.
She doesn't like to be called an influencer, as we all know. Shrishti Garg on Twitter, Gargg, because she's the real G. She started off on Twitter and Instagram Reels, where she makes content about Gen Z for millennials, so that they can understand what the hell is going on with Gen Z. Welcome to our show, The Chashmish Podcast. Shrishti Garg, how are you? Oh my god, this was the sweetest introduction I've ever heard. Like, I wish I could like record this and show this to my family the next day. Like, ये रिकॉर्ड हो रहा है पता ना, वो YouTube पे जाएगा अभी. Now I'm just gonna like show this to them. कि ठीक है, हाँ मेरी इज्जत है समाज में कुछ. इज्जत, Thank you so हाँ much. लोग This is- देख रहे हैं, समझ रहे हो? Yeah, and I think I really like the fact that I'm somewhere between a Gen Z and a millennial. Like, I Right. just love that I'm being the Gen Z for a millennial and explaining the Gen Z terms to them. Crazy. What is in the middle of a Gen Z and a millennial? I तो don't even think I'm in the middle of millennium or anything. मैं तो कहाँ चली गई? बुड्ढू से पहले क्या होता है? बुड्ढों Millennial से पहले क्या होता है? Ancients. Extinct हो गया है मेरा मुझे. जैसे ancestors हमारी. Himani is our ancestor. Millennial वो मतलब उसको सही में समझ नहीं आते, मिलेनियल्स वाले नहीं आते. इससे उस दिन पूछिए ROFL क्या होता है? क्या होता है पता है हिमानी? Of course, right. ROFL is Right. like Facebook from 2013. Right. और Way ROFL back. is millennial, right? Actually, Gen Z तो अभी अलग ही level चले गए हैं life में. हाँ, Gen Z is like Gen Z slaps, bro. They is- slaps. नहीं, एक मैंने सुना था ना, Oh. जैसे सिम्प और ये सब आ गया ना अब तो नया मार्केट. हाँ, simp तो आपको पता ही होंगे. हाँ वो तो मुझे अब पता चला, वो एक्चुअली करण जौहर बहुत ज्यादा जो wannabe Gen Z आदमी है, उसको देखने के चक्कर में पता चल रहा है हमें. Shrishti is like Please, wrong guys, place, bro. Karan is going to be like my future godfather. I have Oh to be my nice. Because जल्दी I am आगे not a बोल दिया. nepo kid. I am not a nepo kid. You won't like let me enter. Nepo kid. No, that was the funniest thing. Have you, वैसे talking about the fame, we were just talking about जैसे you were saying कि भाई मैं इतनी famous नहीं हूँ, whatever. But in your house, like when you Yeah. do like 1 million on a reel and फिर मम्मी कहती है बर्तन जाके धो. How does it feel? Like how is that dynamics like? मेरी मम्मी मेरे को ये नहीं बोलती बर्तन झाके दो, मेरी मम्मी मेरे को बोलती है ज़ारा को पॉटी करा कर लेकर आओ. तो वहाँ पे मुझे मेरी औकात पता चल जाती है. It's in like full how honesty. कि क्या? वो जो नहीं चला था मीम कि भाई ना से ज्यादा क्या बोलेगी, इसकी मम्मी का वही चल रहा है कि भाई इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करेगी, पॉटी करा के आप अपने कुत्ते को. No, but like, and I think also the fact that I live in Jodhpur and मैं सिर्फ इंटरनेट पे बहुत cool बनती हूँ, but in real life I'm a big introvert, so I don't step out of my house at all. And since I don't step out, I don't know कि बाहर मेरी इतनी इज्जत है. So it's just me in my room with my dog and my mom feeling like I've hit 1 million views and that's it. That's my peak fame. Wow. मैंने एक I was watching one of your Q&A things जहाँ पे you were almost like वो तारीफ कर रही थी कि भाई तुम लोगों की वजह से you know I have done all of this, ये वो, like it was almost like very extravagant कि भाई कि वाओ कि कितना cool लग रहा है कि भाई मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, like gratitude, full gratitude. और एकदम से कहती sorry guys मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, and that was the funniest shit कि भाई oh shit that you know that thing कि भाई oh ये अभी यहाँ Okay, थी yeah, और this is from my YouTube video, right? हाँ and that the same thing happened to like हम लोग full prepared It कि just happened, celebrity. यार. Yeah. Happened. लैपटॉप हैंग कैसे हो रहा है? मेरे को Zoom तो business कब call ले रही है करना लैपटॉप नया, पड़ा. कब ले रही है? That's my next question. यार थोड़े पैसे आ जाए तो मैं मैक लेने का सोच तो रही हूँ. I'm actually gonna complete my last semester of college, so थोड़ी हाँ. इज्जत बढ़ जाएगी समाज में ग्रेजुएट बनके. So that. And you're doing fashion communication in college, right? Yeah, yeah. What's that about? Don't ask me because I really don't know. I am barely passing in college. Why it's did you only- choose फैशन में this? फेल हो रही हो यार, फैशन में बच्चे फेल होते हैं, मजाक चल रहा यार है. फैशन भाई, वो में भी बच्चे बताओ. फेल नहीं होते हैं, बच्चों को ट्रॉमा मिलता है फैशन में. पता है when you क्या like see trauma हो a गया jury, तुमको? when you see the jury right in front of you questioning your work कि ये क्या टट्टी बनाया भाई तुमने इसको, तुम अपने आप को फैशन स्टूडेंट क्यों बोलते हो, ऐसे आंसू निकलने वाले होते हैं ना. That's the real big boss happening. But Seriously वो real. मुंह पे ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये क्या बनाया ये? Yeah, Are they're you- like, do you consider yourself a fashion student? I'm like, yeah, of course. कपड़े नहीं देखे मेरे. उससे बोल हैव यू सीन रणवीर सिंह, ही इज अ फैशन आइकन. कपड़े नहीं पहन रहा है वो बंदा. When he can be a fashion icon without clothes, at least I've made मैं something. अभी You कुछ give it back बोलूंगी to उस them. पे मेरे को लोग कैंसिल कर देंगे. राइट विंग मेरे को पूरा कैंसिल कर देगा. So I have already faced a lot of death threats on Twitter. So now I'm just gonna be like quiet. Death threats for you do comedy tweets. You No, face death actually, threats for yeah. makes sense.
It does happen, like whenever somebody with a good number of followers, whenever they tweet something political or something तो तुमने controversial, क्या you will लिखा get जिस पे तुम्हें डेथ थ्रेट हुआ है? यार मुझे मैंने बताओ जरा। 2020 में कुछ लिखा था, I think it was about the farmers or something Did you like write that. something like कि कितनी थाली बजाऊं, कितनी बजाऊं थाली भाई? No, yeah, but whenever, even like I tweeted on Ranveer Singh recently, I tweeted that it's concerning how Ranveer Singh's pictures have become a national issues when the real national issues are not becoming national issues. Right. So some chick from, I'm sure she must be from right wing, she's like, then people like you and Ranveer Singh should leave India. You guys are shameless and you should leave India. I'm like, okay, girl, shit, हाँ if तो I could, I बोलना would have. yes. बताओ मैं तो कहाँ, खुद यूरोपियन कौन सी summer वीजा enjoy तो करना दो. चाहती हूँ. तूने बोला नहीं कौन सी कंट्री जाऊं, वीजा तो दिलवाओ. No, but अब तो आदत सी हो गई है ऐसे चीजें कि at this point I've made peace कि भाई hatred तो मिलेगा ही for sure. So learning to अच्छा live शिशी, with it. what is this demographics of these people जो troll कर रहे हैं? Like you must have gotten so many trolls. What is the main demographic? Is it like जैसे हमको जो trolling होती है वो usually fake ID से होती है और no profile picture and one follower type के. Yeah. And do you get the same or do you get like real people trolling you as well? I definitely get those kind of like bot trolling that you guys get. I also get hate from other creators, like other Instagram creators. You What? know, like I've heard people are like But that's for clout, backbitching and right? gossiping. They're just That- like isn't gossiping that- and backbitching about me. On So the Is yeah, it like net? in internal circles or on हाँ the वही on पूछो, like on on the social net media? or is it like behind your back? I think in their close friends story mostly. Also उससे like क्या whenever फर्क they पड़ता like है? meet, you know, like whenever they meet together, they ought to, and then in their DM. So I've heard that people are talking about me, and some creators are talking about me. My God, And at that's this good point, news. Yeah, That's I was like, actually- okay, yeah. I'm getting famous. Yeah, You know, no so I'm shit. so important to talk about. But ठीक है, at this point, I've sort of learned to live with the hate. Like I'm शिशी just कौन है ये लोग, एक बार कर दे आज इनकी बात. यार मेरे को आज genuinely इनको बता खुद देते हैं. पता होता ना तो मैं तो इनके DMs में आग लगा देती. But I genuinely don't know who these people are. I just know that they do this and I have made peace with it. And when learning- did you know कि ये हो रहा है, मतलब कितने टाइम से हो रही है ये चीज? The whole creator thing probably from a month, because if you saw like my followers only increased, you know, very exponentially from 50K to 100K within a month's time. And I figured, you know, people were talking about it like aise kaise, because I was somebody who was always like at 20K, 30K and all these creators were ahead of me, and then suddenly I took the leap and my views were going wild. Like every third video was hitting 1 million views at least. So yeah, Is it? I have a like a question about this. Like, is Yeah. it? Do you think people are saying कि यार ये talent कैसे काम कर रही है? तो Instagram Reels है bro. Talent तो कर ही नहीं सकता काम इस पे. They Is do, it something like? trust me. They definitely, they're like, you know, success comes to these young people very quickly. These young creators, इनके दिमाग पे success चढ़ रहा है. I'm like, fine, okay, auntie. But then you Yeah. were making videos since how long? I have been, I think 2019 में, do you remember Snapchat पे वो Kylie Jenner वाला filter होता था बहुत पहले with big lips and all. तो मैं college में उससे record करके I used to put on my stories, and some people used to tell me you're so cringe, don't do it. And I was like भेचो अब तो और करूँगी. Bro, ये तो सबसे ज्यादा वो लगता है क्योंकि I have done Yeah. this too with like different like वही Instagram stories पे ही. But when someone says like bro मत देख भाई तू, excuse Yeah. me, Yeah. this is not for you, this is for me, ताकि मैं बाद में देख के खुद हंस सकूं. True. Like it's not for anyone. हाँ but हाँ continue Yeah. though. So, No, yeah, but in अच्छा, 2020 I 2019. stopped. Yeah, so Huh. then 2020 में pandemic happened. We were all at homes only, and for the longest time I did not put out content on Instagram because I was like, oh no, what if this guy is never gonna like me, and what if like my friends are gonna gossip and all. Right. So that was the biggest mistake of my life, that I didn't, like, all these famous creators right now, they're very famous right now because they started in very early 2020 stage. Yeah, जब Right. reels just आया था. And I started in 2020 December, like एकदम end. But I really wish if I would have not thought about that one guy or some people from my college, I would have been at a bigger number. But ठीक है, it's just a process. होगा वो भी It's होगा. No, but also I the feel- time वो कब हाँ. start करने वाला है, like Yeah. उस time पे feel ही नहीं है तो फिर क्या ही you know. you Like, put But it yeah, out also I anyway. feel like कि मतलब मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली से बोल रहा था बिकॉज बहुत सारे लोग ना दिस ओवरनाइट फेम टर्म बहुत ज़्यादा चलने लग गया था आफ्टर पैंडेमिक एंड लोगों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि ओवरनाइट हो गया बट एक्चुअली
जितने भी लोग फेमस हुए थे ना, मोस्ट ऑफ देम अगर तुम उनकी जर्नी फॉलो करो तो वो लोग काफी टाइम से कर रहे थे. इट्स जस्ट दैट पैंडेमिक में वो आउट ऑफ नोवेयर आ गए और लोगों लगा भाई ये तो ओवरनाइट चल गए, बट नहीं, वो बट एक्चुअली उस बहुत लोगों के टाइम पास से भी कर रहे टाइम था थे. देखने का ना. हाँ, That but was the ये other the thing. thing is there is a very big misconception in the market right now, I feel, which says कि तुम्हारी किस्मत तो ओवरनाइट चलेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा. वो Right. सब लोग बहुत टाइम से घिसवा रहे थे अपनी, वो कहीं ना कहीं और घिसवा रहे थे. इट जस्ट वर्कड आउट फॉर देम ऑन इंस्टाग्राम. So Yeah, many. no, I यार, started even- at 900 and today I'm about to like reach 1k. So I think it's just a really long process. और वो 2 साल से ऐसे build up हो के now it is at this level. Is Yeah. it any different? Is it any different from since you were at, let's say, 20,000? जो कि 20,000 is also a big number. Yeah, it is a Yeah. When you were at Yeah. 20,000, did you feel, and this is like weird, except the number part, कि भाई एक मतलब 1,11,000, except that number part, is there anything different about how you do things or how you look at things now? Definitely तो मेरे पास एंड्रॉइड था तो मैं इतनी अच्छी नहीं लगती थी. नाउ आई हैव एन आईफोन, सो अब मैं लगती हूँ कोठी बंगले वाली. पैसा आते ही लोगों की रहीसी वो चेहरे पे दिखने लगता है. कहते हैं ना, वो Yeah, पैसा हो तो so- बंदा खूबसूरत दिखता है. Now people are like, oh my god, you're so aesthetic. I'm like, no, it's just an iPhone. So you know, like it just shows that. So obviously iPhone आ गया, and now when I look back at my 20,000 वाला content, अब मेरे को लगता है क्या cringe बातें बोलती थी यार मैं छी. But ठीक है, I mean, it's. I think when I'm at like 200k or a million tomorrow, I'll probably look back at Gen Z series and be like, छी क्या कौन इसको देखता था. No, I meant in more of the way, like how do you feel about it? Like, does it affect how you do things anymore? कि भाई मैं जैसे घर पे आई, फॉर एग्जांपल I'll give you an example, कि घर पे आई कि मम्मी ने बोले जैसे कि भाई कि ज़ारा को जाके पॉटी करा के आओ, and then you're like, mom, have you seen my Instagram? आप जाके करा के आओ पॉटी, मैं नहीं जा रही. No, I think when in terms of how I feel, earlier I used to just shit post, you know, कोई भी content आ रहा है, मैं बिना कुछ thought दिए, बिना कुछ script लिखे, I would just make it. But now I know so many people follow me, and not just that, like so many big creators like Kusha Kapila. I have looked up to her since so long, and now she follows me, and we met, and like she really appreciated me. So now I'm just like so many verified people, directors and writers and actors follow me. People from Bollywood also follow me. So now I'm not just accountable to my followers, but also these people, you know, and I want to work with them someday. So the kind of content that I make now is more like thought of, like it's very scripted. जो फर्स्ट थॉट आता है उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ. आई नीड टू मेक श्योर दैट दिस आइडिया इज वर्थ डूइंग. तो बहुत अकाउंटेबिलिटी फॉर श्योर इंक्रीज हो गई है. लाइक आई हैव टू बी वेरी सोशली अवेयर बिकॉज आई डोंट नो हु विल आई ऑफेंड ऑन द इंटरनेट टुडे. So I have to be. But isn't that very tough with conscious. comedy and the amount of people that we have in India and the amount of sensitivity for every fucking topic? It is. I feel not just creators. I mean, sorry, not just like audiences, but creators also get so offended. Like they probably would have done something super long back, and even if I haven't, even if I've not like copied that video, they will still come at me like, oh ये तो मैंने इतना time पहले करा था, why are you copying my content? I'm like, Oh, "Bhai, really? no, yeah, I've heard They that find the so time many to text you. Nice. Dude, Yeah. they find the time to fight with me, and they find the time to post it on their stories. That you Really? know, whatever bullshit. इस Yeah, क्रिएटर it का नाम took- तो पता होगा. इस क्रिएटर का नाम तो पता होगा. Oh, nice. ये ना एक वो Nice हाईलाइट है. रील आएगी सृष्टि के उस अभी पे, मेरे को haters. डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा. हाँ, कॉफी विद करण की तरह. Like what a Karan, I can't take names here. But yeah, no, this has happened. People think that I'm sort of trying to copy their content, and I'm like, क्यों भाई मेरा खुद का But तो क्या on चल the रहा है? internet, everybody is copying everybody. Like, there's an extent that जब तक is- original That's content internet. आएगा. Like, Yeah. I Yeah. have seen big creators, and I don't want to okay, I will name one. Like, who's fucking who has copied one reel that I saw, which was going very viral, and then I saw it on her, and I was like, what the fuck? How the hell is she copying? Like, Who? why is she Who is that? copying Who shit? gives the यार ये name? हम गलत कर रहे हैं, वैसे पता है सृष्टि का ये फंसा रहे हैं दोनों में हमको कुछ भी मिलके. नाम दो यार. No, I'm giving mostly Sen. I'm to giving the name. I was not expecting. Oh. I didn't ever expect mostly Sen would ever copy. But then there was one reel that somebody else made before her. वो साउंड पे नहीं करते, कुछ फनी मीम कर देते हैं. हाँ, उसने हाँ, किया था किसी और छोटे क्रिएटर का. मैंने ना पहले ही रैंडमली देख लिया था, एंड देन आई सॉ इट ऑन हर पेज, एंड आई लिटरली वेंट बैक टू दैट गाइज page to see if he made it before or she, and he did before, and I was like, fuck dude. तो आपने उसको मैसेज नहीं किया?
तूने कॉपी किया आप ऑफेंड आप एफआईआर करा दो offend हो दूसरे जाते के करा दो भाई मेरे दोस्त के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं आई नहीं हैव वो टू मेरा डू द दोस्त भी नहीं था ना एफआईआर दूसरा बंदा मैंने बोला कोई नहीं अब उसको मिल रहे 3-4 लाख इस पे तो कोई नहीं सही बात है बेचारी Shit. घर चल रहा उसका अच्छा सृष्टि But आजकल everything is a copy of a copy of a copy. Yes, Like nothing it out is. there Oh, is yeah, original anymore. yes it is Yeah. it is except it's all honestly copied. I have not really seen like I've seen content like you do उस क्राइटेरिया में मैंने बहुत सा कंटेंट देखा है लाइक स्पेशली जैसे लाइक आई लिव इन टोरंटो तो यहाँ पे Yeah. कैनेडियन टिकटॉक पे Okay, there's fine. so subtle much plug-in. subtle plug-in subtle iPhone but जैसे यहाँ पे कैनेडियन टिकटॉक पे बेसिकली जो द एग्जैक्ट काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू डू देयर इज सो मच ऑफ दैट देयर इज लाइक अबंडेंस ऑलमोस्ट कि भाई कि वो एग्जैक्ट लाइक टेलिंग की जेनजी लोग कैसे करते हैं, देन मिलेनियल्स वाला दे आर डूइंग द there's nobody in India doing it in the same way you are doing it. Where do you get your inspiration from? Like, do you look at a lot of outside, let's say Twitter pe there's a lot of TikToks that are flying over. Right. Do you do that? So this whole Gen Z thing, how it came to me, I think it was last year when I was on a work call and a colleague of mine, we were just discussing some like content. And he's like, यार जब Gen Z की शादी होगी तब कितना cool होगा ना. And then मेरे ग्रुप में ऐसी फेरी लाइट्स चल रही थी. I was like, हाँ ये लोग तो पता फिर एक नहीं बल्ब जला. शादियों में हाँ ये बोलेंगे तो फेरी लाइट्स के बिना मैं शादी कैसे कर लूँ, you know. तो we just started talking. And then he's like, सुन this पे वीडियो क्यों नहीं बनाती है? And I was like, so then I just started this whole thing. And last year इतना चला नहीं था. But today, so not today, but this year only, I got this really kick-ass idea कि इसको भाई revive करते हैं. But this time, like how I said, पहले मैं अपनी script बस ऐसी लिखती थी, without any like working and without any punchlines and all. So this time I really put in like a lot of thought और मैंने मस्त dialogue writing करी उसकी, देखा कि क्या-क्या मतलब trending audios चल रहे हैं जिसके around मैं punchline बना सकती हूँ, you know, like trending words like mommy, daddy. So like I made punchlines around those words and it blew up. It's like at 4 million today. So I think बहुत ही random चीजों से मेरे को inspiration मिलती है. Sometimes I think last month ago I went and I saw Bachchan Pandey, which is a horrible movie. I don't recommend it. But you know the way they were introducing Akshay Kumar की hero की entry ऐसे, villain की entry ऐसे, तो मेरे को उससे idea आ गया कि how Bollywood introduces every character. So I think I just observe a lot. Right, like how it happened in Deadpool की beginning. If you have seen Deadpool, brilliant movie, although अच्छी movie है देखना. Okay, तुम दोनों But बात in कर the सकते beginning हो of इस बारे that, में. it's exactly like that. But obviously, you know, like अक्षय कुमार की अब movie में आया तो वो Deadpool तो 4 साल पहले करके खत्म कर Yeah. दिया. Basically, when they start the movie, it's like from the ass hats producers to the bullshit cameraman works, and well, literally what they're making fun of them like themselves. But it's like a lot of it is just called the self-aware content. Yeah. कि you're just self-aware. Yeah. Is it also you in reality? Are you very self-aware? अब यार ये तो मेरा थेरेपिस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया. मैं क्या अपना जर्नल खोल के बताऊंगी? Yes, I am working, I am hydrating, drinking, Oh my God. and Very good. but no, I think in general when I talk about my content, when I talk about my content, I'm drinking. no, I have like we have 2 bottles. Oh, you want to Oh see भाई, mine? ये देखिए अरे अभी देखो We got a winner, guys. अभी देखिए हमारी Oh, is this the 2-liter one? No, it's not. This is not even 2 liters. This is 1.8. एक ही कर ले Just. come on Himani. Yeah. But हाँ Yeah. अच्छा moving on from that Yeah. we read about you that you are from army background. Yeah. Your dad? Yeah, so my dad currently lives in Pune, but yeah, we've been traveling for, I think since I was born. I've always my last school was apparently my 8th school. So every time we just like live in a city for 2 years, maximum 3 years, and then we move out. Wow. Have you left कि आधे स्कूल में कि स्कूल आधा ही खत्म हुआ फिर दूसरे जगह पे आधे स्कूल से Yeah, start, like, आधे yeah. ऐसे? Every time, like 3rd grade, 8th grade, 10th के बाद I came to Jaipur. So things have just been on the road. Right. I want to ask you a very important question जो कि मेरे को लगा could relate to because I have changed school so many times as well. Have you ever pretended to be just somebody else suddenly क्योंकि अब नई city है nobody knows me so I can just pretend to be anyone? Have you done Yeah. that? When and how was it? So till 10th, I was in Delhi, and Delhi was the only place where we stayed for 5 years because of my 10th. And then we moved to Jaipur. And मैं थी ऐसी चूतिया सी teenager. तो मैं तो दिल्ली से आई हूँ. ये जयपुर वाले बच्चे मतलब ये क्या है? इनका तो standard ही नहीं है मेरे आगे. तो मैं बहुत like they say fake it till you make it, right?
So I just started Right. acting like this really pricey Regina George from Mean Girls. And I was just like, yeah, tell me what's up. Acting like that cool kid from school. And apparently it What school started were you in? I was in Jayashree Periwal High School. New school. Yeah. Jayashree Periwar. Where is this? I have never This heard. is in Jaipur. This is in Jaipur. Oh, yeah. I Acha. thought you were talking about your Delhi school. हाँ, In मैं वही Delhi, बोल- I was in two schools. I was in Gyan Bharti and I was in Air Force Bal Bharti school. Oh, So, अच्छा. Okay, yeah. okay. So then I कौन came से to एरिया Jaipur. में कौन से एरिया हाँ, में मैं भी ये- यही पूछने वाली थी. What हाँ, area is this this? Gyan Bharti is in Saket and Okay. Air Force Bal Bharti was Lodi Road. Yeah. Oh, Okay, अच्छा. okay. But ठीक है, you so- lived in South Delhi only. No, Cant, my home was in Cant. Cant is in अच्छा, Dholapur. Can't. अच्छा, Yeah, right, yeah. right. Yeah. ठीक है. Yeah, so like Okay, in हाँ, फिर? 11th when I came, I was obviously very like pricey. हाँ, मेरे को तो बहुत ही modern woman shit like that. So I started participating in a lot of debates and I was very overconfident. I was always like ये बच्चे का compare करेंगे मेरे And से, this मेरे did this सामने come क्या from standard? somewhere or was this like completely a new person? Like you thought कि भाई No, did no, you have yeah, imposter I mean- syndrome? No, I think I always used to think in my head that I'm this very high pricey girl from Delhi और ये जयपुर के लोगों का तो कोई standard ही नहीं है मेरे पास. But I take that back. Okay, I love Jaipur now so much. LS, so LS everybody. Yeah, what is this, yeah, guys? तुमको सरोजनी नगर नहीं पता क्या? So, yeah. And I think I started participating a lot in 11th in debates, and I used to win every single time, like every single competition debate, just because I was very overconfident. It reflected, and I. But yeah, I think that is Let's where I got a go. lot of my confidence from by faking it actually. Right. And do you still do that? Now I don't have to fake it. Now I'm actually famous, so I can just show them my Instagram. I'm like, ये बेटे देख रहे हैं. Do you get do you does it hinder with like I don't know if you want to go there, but like with your dating life कि भाई कि somebody just wants to date you because you're famous. yeah, that happened a lot. I think when I was on dating apps last year, every guy used to add, वो phase नहीं होता जब आप dating app से Instagram पे shift करते हो and then the conversation stops. So whenever I used to add people on my Instagram, Fuck, that's so true though. yeah, whenever I used to add them on my Instagram, they're like, oh, influencer. I was like, yeah. So all these guys were like, अरे तू तो मेरे ऊपर content बना देगी. कुछ भी मतलब. Oh my god, this is what my fucking husband Yeah. said I know, the first time I've he had met that. me. Oh, No, fuck, but then I yeah. luckily found somebody who's also into content and we just like vibed. Oh, Bro, nice. this is like another thing we were discussing कुछ दिनों पहले मैं और my friends Yeah. कि जितने भी celebrities होते हैं, the biggest reason they date other celebrities is because they are the only ones who understand what they're going through and like where are they Yeah, in life. yeah, वरना वो yeah. like वो होता है ना कि यार एक वो romantic, it's very romanticized कि भाई कि बहुत बड़ी actress थी and then she just dated Yeah. somebody. Yeah. सड़क से उठा के किसी को भी I boyfriend बना am- दूंगी. no, I am not dating any influencer. My boyfriend was in content. Like we were in the same company that was into content and like copywriting and all. But yeah, I think he really understands because he has lived in that content zone. He has his own page also. So I think he understands from that zone. But yeah, I mean, somewhat. Is it public कुछ भी- information? Like your boyfriend, is that public information? No. If my relatives will be like seeing this, then it'll be like, so yeah. I don't know. I just want to be single, mysterious girl on the internet who's very like mentally ill. But yeah. Right. Do you think okay, it's a very sexist question, I'm aware, Yeah. but do you think that it matters just say when like so my ex-girlfriend, she was an influencer as well. उसके लिए ना like we actually discussed this कि is it better for her to show her profile as she's single या फिर should she add me in? Because before I was in the profile like all everywhere and then I told her कि अगर तू ऐसे दिखाएगी नहीं ना कि I'm your boyfriend तो maybe it will help you out more. Yeah. Do you think it actually does or is it just like a thing that जो मेरे को लगा था एक बार? I think for me personally, I feel I want to be very, very sure of this relationship until I make it public because once your relationship is public and once you break up, then you're answerable to a lot of people basically because they are Bro. interested कि क्या हो गया and you Bro, don't want हाँ. to go down that path. Oh कि भाई shit! क्या Oh, बताऊं you know भाई? what? Actually, Shrishti, Yeah. I just realized I have not told anyone on the because I like so my ex-girlfriend and I used to do this podcast, and this is my first time Oh. actually
telling this publicly कि now she's my ex. Like that's fucking. What the hell, guys? What's up, everybody? Hi. Oh my इन्होंने god. डिस्क्लोज कर दिया आज Bro, मैं कर दिया। लिटरली मैं पता है लास्ट टाइम हिमानी ने कुछ मेंशन किया तो मैंने हाँ, कटवा दिया था कटवा कि यार अभी अभी नहीं बताना किसी को, अभी नहीं बताना हाँ। किसी सृष्टि क्या Oh, man, की खुशी shit. में आज बता दिया जाओ जाओ को. So हाँ, just continue. हाँ तो फिर you just want to be sure of कि वो है यही बंदा है. Sure also plus यार मेरे relatives बहुत ऐसे judgmental भी होंगे and I आंटियाँ think हैं। you know हाँ। yeah and you know I'm a यार very big फर्क believer पड़ता of तेरे को nazar. मतलब like हाँ ओ अच्छा Yeah. okay. Yeah. So like I just feel like यार नजर बहुत solid लगती है. Even when I hit 100K recently, so I went out and I celebrated with my mom and my nanny. And when I came back, my head was exploding like crazy for no fucking reason. Okay. And I was like नजर लगी है, किसी की नजर लगी है. मैं पूरे दिन से अपने पेज पे चिल्ला रही थी. So yeah, I think I'm a very big यार believer ये कैसी of नजर हुई bad कि vibes. 100K पे नजर भी लगी, इसका सर दर्द हो जाए आज. ऐसे ही होता है मेरे साथ भी ऐसे आज हुआ। हुए वो भी 2 सच्ची। घंटे के लिए, रात का सर दर्द हो फिर जाए. मेरे को लगता है काइली जेनर वगैरह को नजर क्यों नहीं लगती यार, ये तो अपना प्राइवेट जेट दिखाती है, मेरे को क्यों लगती है? That's actually a good question. So you like right now you're not planning to like abhi to and okay, this is like another thing. One again, it's another sexist question, but do you think being in comedy as a girl is a disadvantage almost, because a lot of people don't like, although I find a lot of women very funny, जैसे Amy Schumer and like जो Tomlinson करके, I don't know if you like follow a lot of like No, बाहर I के haven't, comedians. yeah. Do you who are the comedians do you follow, like कौन से आपको अच्छे लगते हैं? Indian comedians are like from Any outside. like who are your like favorite ones? I love Kanan Gill. Kanan Gill has my entire heart. my I think God, he is I only had a hot. Is it biggest because of the crush, yeah. comedy? He's just hot. He's an This is army the brat same- also. I was like, "Arey, Right. apna," yeah. But no, I think तो अपना अरे cousin नहीं. cousin. No bro, no. तौबा No, but he's very hot and he's very funny and he's very hot. But yeah, I That's think the that's why I only really thing. like. He is just hot. No, he's Because like, I think like Himani, you've worked with Kanan, right? Nahi, but I was also, I'm literally the same as you. Like, I was a big Kanan fan, big ass fucking Yeah, Kanan fan. वो yeah. pretentious review वाले days थे. yeah. But eventually, I feel like it's just his looks. It's actually not real comedy. He's not like funny. Like there are way funnier people, because I was in the comedy circuit for a while and I saw that okay, it's just him being very cute and hot on stage, which I still appreciate. But if you look at the content, it's very average and like there's Oh. better people. क्यों Like सपना I तोड़ feel रहे हो like बेचारी का? Bishwa is I जो still wanna Bishwa meet him. था. You met him. Oh, you haven't met No, him? I want to meet him. Like I've been manifesting this since I was in 12th. अरे Yeah. इसको मिलवाते हैं ना. That's You it's not need hard. to just go to So up Bombay. for it. चल Oh, बॉम्बे चल I've been मिलवाते हैं. planning to move in December, hopefully. But Oh, nice, like nice. I have seen these people perform, and I feel like Biswa is any day better than him. Biswa And is he damn used to funny. he Right. used to write pretentious reviews. This was Bishwa's Oh. idea. Like it was his idea. Like Kanan wanted to do it, but everything was written by him, and these two were acting. So like the comedy bit was him. Yeah. Kanan Okay, was I the didn't know beauty, that. this Kanan was was the the brains. beauty, Kanan was the beauty Yeah. of the show. Obviously, that's why Right. they Yeah. became famous amongst the girls, because obviously Biswa wasn't like that great looking us time pe. But like the comedy bit is him. But I think Right. the peak comedy content we've ever had is genuinely AIB. Nothing can Oh, come close fuck to yeah. what AIB 100%. was. 100, Yeah. 110%. Yeah. That's I why feel they the shut Even it. like, yeah. You don't want to go close to that. I will start So- trying. But talking about writing, जैसे बिस्वा लिखा, you write and you've Yeah. written with Shubham Saloni, like this is Yeah. like old. Oh yeah, old. yaar, Have what you is done this? it I with? want to Yeah. know what is this? What is this writing for these people? So you're So telling I- me you've literally bursted a fucking bubble. You're telling me all their jokes are not written by them. Are you fucking telling me this? This woman has Should I? become big ass just No, by actually- by getting her fucking jokes written. So Shubham reached out to me on Twitter and he was like, your writing is very fresh. Would you want to write for us and all? And I was like, yeah, sure. I was just a 19-year-old kid and I was like, must opportunity hai. So I took that up and initially it was, so Saloni had this IP with Amazon Prime where she was playing this character of an auntie who was explaining, Amazon Prime ke shows and
movies to the audience, that character. And Shubham and I were co-writing for that whole episode and all. So it was a 5 to 7 episodes long IP, and her script होती थी 2 से 3 मिनट की. So I wrote for that. I wrote for the first episode, which was about ये Breathe Into the Shadows का था ना, आर्मादवन का जो Right. पहले वाला है. Right. Yeah. So we wrote for that, and then they really liked my writing, and they were like, okay, we want to hire you also. So can you write for Saloni's branded video? So I used to write for her branded video only, not like her original. So you're content. writing the jokes, like she's just acting them out. But you still do Don't that. get Okay, I me want to in know. trouble. Do you? No. You, bro, इसमें trouble क्या? Does she gives you credits, right? For that, doesn't she? Yeah, Like, yeah. They used to like mention this in the caption that I've written for this video. Oh it's really? already public news. No, How no, the she- fuck have I never noticed But- this? Exactly. Nobody notices the night. No, not Yeah. anymore. I was offered for Okay. some creators. Even I think when I was at like 30K or something, even then people were offering me to write for them. Like big ass Oh. creators, okay. And I was like, bro, no, मैं अपने content पे ना invest करूँ ये writing. हाँ. So I think Yeah. Right. even though being a writer is great, but when you're also trying to get into acting or just as an like influencer, then it's horrible. Please never write for anyone else, because even if you get the credit, nobody's actually going to open the caption and see your Yeah. name. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. यही That तो is so problem है. true. Like I Yeah. never thought. I thought जैसे वो books में तो it is very popular. There's a ghostwriter, right? So like Yeah. it's a popular Yeah. thing. I did Yeah. not know these fucking comic creators are They getting do their. it. सही है यार, तू A देगा lot भी of एक big साल creators में. do it. Next one year, Shubham, you see you motherfucking Oh will my- interview me, okay? I am finding a writer. Fucking write for me. I don't give two fucks. No, but that's true. Also, I feel like writing is a more talent job than actually Yeah. acting. Acting. I feel Yeah. anyone can act, honestly, but Act, not a yeah. lot of people can write. Yeah. That's true, huh? हाँ मतलब it is very true. Like I am literally like shocked because अभी भी मैंने सलोनी की TED talk देखी है. She never mentioned a ghostwriter. I'm like, ओ who the भाई fuck? सोचो मुझे मैं करती हूँ लेकिन हाँ, लेकिन उसने तो मैं fully नहीं था- कर रही एक्चुअली उसने में legit अपनी TED talk में ये बोला है कि भाई मेरे पास Okay. बहुत टाइम होता था. मैं कॉलेज उसने स्टोरी में लिटरली ये बताया कि मैं घर गई, लॉकडाउन पड़ गया, मैं किताबें लेकर नहीं गई थी, तो अब मेरे पास जो लिखने का टाइम था वो डबल से ट्रिपल हो गया. तो अब मैं दिन रात बस लिख ही रही थी और एक्ट ही कर रही थी और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता था जो मेरे पास मतलब कुछ उसकी मम्मी कुछ सब्जी करती थी वो 15 मिनट का टाइम था, मैं उसमें वीडियो बनाती थी, खट 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 गॉट फेमस. एक्सप्रेशन देखो सृष्टि के एक्सप्रेशन देखो भाई साहब. आई Yes, एम लाइक one of the other things सलोनी का फेमस है, like it's not कि वो नहीं फेमस है, but one of the other thing is क्योंकि शुभम बहुत टाइम से नहीं घिसा नहीं रहा बट है. आई फील लाइक फॉर द Yeah. लॉन्गेस्ट टाइम पीपल डिड नॉट नो वो उसकी बहन है. मुझे नहीं Yeah, पता फॉर द even लॉन्गेस्ट I didn't know. या Even I नहीं didn't know. नहीं ये नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है. टुडे शी इज बिगर देन हिम एंड ही इज बीन नहीं इन but यार इंडस्ट्री फॉर कहीं ना कहीं लॉन्गर यार देन वो हर. एक्सपीरियंस तो हेल्प करता ही है ना, मतलब आई एम नॉट हाँ, सेइंग कि उसने उसको experience शाउट आउट है. किया है, आई एम जस्ट So सेइंग Shubham was सीख लिया, वरना managing दिक्कत है. Saloni initially when I was writing for her. Then हाँ. Shubham was just her manager only. But I think whatever she was saying in a TED talk was like true only because वो अपना main content तो खुद ही लिखती थी. I was just doing the अच्छा. branded Branded content. bit. Yeah, just Right. like the Ah. paid वाला content. That's it. Yeah. नहीं 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 आई ऑल्सो फील बिकॉज ये क्रिएटर्स को थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी होती होगी ब्रांड टाइप्स पे, तो उनको चाहिए Right. होगा एक एक्चुअल राइटर Yeah. उसे फॉर्मेट में Right. लिख के उस ब्रांड को दे. सो मे बी दैट्स Yeah. वेयर दे हायर्ड यू. Plus maybe like as normal content they have so much time to like write for normal content. फिर branded का सोचने का time नहीं मिलता. So True, I mean if true, I get true, so big, even I would start thinking about having a writer for just like my branded content. Right. Do you want to? हाँ, कौन से नंबर पे will you start If looking? I'm being very honest, I don't think so. Anybody can get that zone of writing that I have. I mean, even if it's a great writing zone, but I just feel like वो जो मेरा वाला punchline है वो कोई नहीं सोच पाएगा. Because I just know that if there's something only I have seen, only I can write about it. So my manager did try to my ex-manager did try to get me like a writer, but जमा नहीं मेरे साथ. So I have never got any writer to write my videos. So I just don't think so. I can see myself having a writer in the future also because I cannot, say something that I have not written because I know for a fact it will show on my face and I will not like it. Yeah, it has to be yeah. relatable. Right. Yeah. Right. But do you think you'll have enough time to keep on writing and doing other things? Because I'll tell you one thing. I've met yeah. very, very famous people. And when I say very famous, I've met people जिनके पास सिर्फ पूरे दिन में एक मतलब वो सिर्फ सोने का टाइम होता है जो अपने साथ होता है. Like I'm talking about that कि वो उनको होटल रूम से बाहर लेके जाया जाता है और पूरे रास्ते उनकी फोटोज खींच रही होती हैं
and then वो आते हैं like Justin Bieber fame, but like I've met magicians, I've met like musicians and stuff जो उतने famous. And one thing they've said is कि जो उनका जो prime talent है ना, like for example a magician, like उनका prime talent magic दिखाने का, right? They lose it. They have to always hire people to do it because उनके पास a photo खिंचवाना is their main job rather than actually doing the magic. Right. So with you, do you think because you will eventually have to get to that point where you have to like leave the control कि भाई कि अब मेरे को बस क्योंकि if you're like why am I telling you this, because my next question जो lead up हो रहा है इस चीज़ के लिए, what's your goal? Is it to be famous or is it कि भाई मेरे को सिर्फ अपना talent ही दिखाना है पूरे time? Yeah, so coming to your first question, my goal definitely is to buy a house next to Mannat so that I can wake up and see Shah Rukh Khan's face. But no, like when I talk about being famous and not having enough time to get into writing, I think मेरा long term aim भी यही है that I don't want to be on Instagram constantly. Like I think it'll be still there just because I still want to be relevant. But my long term aim is definitely to be on Coffee with Karan, sit next to Karan and like gossip like, oh really, she said that. Nice. But so I want to get into acting for sure. And when you get into acting, you won't be writing for yourself. Like there'll be a script writer, there'll be a dialogue writer, and people will be writing for you. So if that happens, great, inshallah, hopefully soon. But yeah, that dream doesn't even seem like ये बहुत दूर की चीज है. Like sometimes you realize कि यार ये तो हो सकता है. मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है ये. वे रुलाओगे क्या यार? I've been giving so many auditions, I can't tell you. But nothing comes through, Like I just get shortlisted and then they're like, no, this other girl made the cut. So it's always the other girl. But I am sort of making peace with it. I'm hoping that whatever's meant for me will happen. Are you trying more TV series or movies? So I recently auditioned for an OTT and I've been getting a lot of calls for TV commercials, but I don't want to be into a commercial phase. So even if I just get one opportunity, I will jump right into it and do it because I want to be in a proper set. But definitely the bigger aim right now is either movies or either OTTs. But do you think वो नहीं होता कि जल्दी में कुछ like you have to like choose also कि भाई कि कौन सी script कर रहे हो, because your first impression actually in this industry like matters a lot more than anywhere else. So do you think कि वो do you choose your scripts like although I don't think वो वाली अभी privilege होगी? No, like when I've got for TV commercials, then I'm sort of choosing because TV commercials I have to be very picky because I don't want to be that TV commercial wala face. But when it comes to an OTT, I think I can't like disclose because I've signed an NDA for that. Of course. But the role was like great, I think I really wanted that role because it was for a big platform also and a great director was directing it. And I haven't heard back from them yet, and it's been like a month I think. So now करें बात करें हिमानी करना फोन करना don't worry, just calling up 1 second. But yeah, like hopefully I'm just hoping something will come through. My friends keep telling me Anushka Sharma ka inspiring story, that's I'm just like what is meant to be will happen. No, but also don't you think कि now with so many creators जैसे कि भुवन भाम हो गए, and I think couple of more people have also done this like for themselves now. They've just created a show their for own themselves. Yeah. Like Sumukhi has done it. Sumukhi has done it for herself. Bhuvan has done for himself. और किसने किया है ये? और भी I think कुछ creators ने करा है कि they've just made their own freaking show. Like they didn't need. जाकिर खान ने भी करा. जाकिर ने वो पूरा वो नहीं बनाया था. हाँ, right. जाकिर ने किया है. So they didn't really need anybody to cast them. They were like, fine, you don't want to cast me. I will write a role for myself and cast myself. So yeah. Do you want to do that? You could also do that. Like, is that in like something you think you can do? Because you're a writer. I really want to do my Gen Z series as, like a series. Like from Instagram, I want to lift it up and make an actual series out of it and pitch it to some OTT. But for that, I need to be famous enough, have a good amount of money. And I think I'm just working my way towards it right now. Well, you just need investors, no? That's like investors and also not that hard to find. Not enough bullshit from college. College does not even like that I do content and all. So I'm just really? waiting for 4 more. Yeah, I mean, people in my college are bitchy as fuck. If they're watching this interview, like you know teachers who you are. or like students? Teachers or your students? Like the students have issues. Teachers, I would say some are okay, some are just like you can do this your whole life. Focus on college right now. And I'm like, no.
मैं जवान से अभी हूँ, but That's true. और मैं Gen Z भी सिर्फ अभी हूँ, फिर हाँ, मैं Gen Z भी अभी I हूँ, can रुक be जाओ. relatable Who and hot knows? only right now. Yeah. And yeah, and Self-awareness I think people points are दो और also बढ़ के very points. like bitchy. Right. तो यार वैसे if this is something you might want to do, like I can help you find investors for this because Yes. we did it for somebody else यहीं पे कनाडा में, and we Okay. were looking for investors. और मतलब हमने बहुत सारे लोगों को pitch किया था, तो I have like a list of people to pitch and shit. तो अगर if you want, Yeah, 100% we can like up for it. पक्का चलो ठीक है, Done. perfect. Talking about acting, okay. Yeah. You're a big Brooklyn Nine-Nine fan, right? Yes. यार वैसे पहले एक बात बता, isn't this cool कि कोई बंदे ने रिसर्च किया जाके और फिर जाके I'm just आपको ही बता very रहा है कि surprised like does it feel like an that interview you- to you कि भाई क्या हो रहा Yeah, है? like I'm just saying, okay, you know, I'm an army brat because trust me, a lot of people don't even know things about me, you know, like I have Right. this cool mysterious girl persona on the internet, but And we have our stalkers. I am very impressed with this whole like research. I feel important. है ना यार, मैं खुद पता है मैं सोच रहा था कि जब मैं लिख रहा था ना, बिकॉज लाइक आई एम राइटर एज वेल, तो फिर मैं भी रिसर्च भी उस तरीके से करता हूँ कि भाई मैं लिख सकूँ, पूरा एक इंटरव्यू डिजाइन कर सकूँ इस चीज़ का. एंड व्हाइल आई वाज राइटिंग आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार एक दिन ना मेरे को भी कोई ऐसे इंटरव्यू करेगा. लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट द होल टाइम कि भाई कितना कूल Trust लगता me, होगा. this was like 2 years ago. मैं ऐसी थी कि मेरे को भी कोई इंटरव्यू करेगा, and now I've sort of manifested it, you know. So thanks to you राइट guys, राइट राइट it's actually happening. राइट. और पता है ये, और आई टेल यू दिस, 2 साल पहले ना लाइक आई यूज्ड टू लाइक अगेन ये लाइक दिस इज व्हाई समटाइम्स आई फील लाइक आई एम आल्सो ऑन अ वेरी लाइक द राइट पाथ, क्योंकि मैं अगेन जो मैं जब भी इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ, किसी से मिलता हूँ, दे लाइक ब्रो जैसे तू सोच रहा है ना, एक साल पहले मैं वैसे ही सोचती थी. लाइक ओके देन आई एम गुड, लाइक आई एम गुड, आई एम Yeah, राइट देयर. trust me, I am a very big believer of manifestation and like destiny. So I really think if it's gonna happen, it will happen. राइट. अरे वो बचपन में बुक पढ़ी है वो द सीक्रेट, कि भाई Yeah, मैनिफेस्ट I करो just फिर हो have जाए. it. Yeah. Bro, ये उसी से same, निकल bro. कर आया भाई. हाँ भाई बचपन में पढ़ ली थी एक बार, फिर तब से कि यही तो करना ही होता है. बट टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, कमिंग बैक टू ब्रुकलिन नाइन-नाइन, यू आर वेरी लाइक जीना लिनेटी फैन, राइट? कैन No, यू I डू think हर I'm a impression? very. Let me Okay. channel that. Let me Okay, so I'll be on my phone, obviously. हाँ. Oh fuck, I missed 11. Anyway, so I can't do like an impression of her, but I can tell you for a fact I really need a Gina Linetti person in my life. Even though she's Right. gonna like shame me, she's gonna insult me like she would हाँ. do that to Amy. But God, it would be so nice to have somebody like that in my life. For You relate sure. more with Amy? Is that it? I relate with Jake Peralta, honestly. I feel Oh, like I am of that course. entertainer of the group person. Group. Yeah. Yeah. Have you followed Andy Samberg, उसका career, मतलब Lonely Island and all that? Have you followed him? No, I've really not. I've just seen him in Brooklyn Nine-Nine, and there's this one more movie now where there's time travel. No, the time stops. What's that movie? कौन सी? Hey, koi. Andy Samberg And- किया? Yeah. Time just stops and they're in a cave. And उसमें वो वाले actress भी है जो How I Met Your Mother में mother थी actually. I don't know any name. Oh, bro, she was the cutest like Yeah. actress I saw. Cause like we were like all thinking. I don't know if you followed How I Met Your Mother उस time पे I haven't like seen it yet. at all. No, not at all. मैंने पता है Office के Okay. last 2 seasons भी नहीं देखे just because somebody told me that Michael Scott नहीं होता in those seasons में. So I'm like fuck it. क्यों Okay, देखे guys, फिर मैं? interview over है. Thank you so much for coming. No, but that's funny though. But so you don't Yeah. relate to. I thought you related more to Gina Linetti कि भाई कि so sassy, you know. Like I don't want She's to talk to sassy, everybody. but यार मैं sassy नहीं हूँ real life में. मेरी बहुत फटती है पता है. मेरे को कोई सुना के चला जाए मैं सुन लेती हूँ. फिर मैं shower में comebacks practice करती हूँ. ये बोल सकती है यार इसको तो मैं. So that is, I don't think so. I just act like her on the internet, but real life में मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ हाँ. Oh my god, I can't believe how much I can relate to you right now. Oh shit. I was just Oh my googling. God. My therapist told me to do this as a homework. तुम ना comebacks Google करो, so that next time a person tells you something, you have comebacks. I was just like writing comebacks in my journal. इसको तो ये बोलकर आऊंगी अगली बार. But yeah. Bro, एक क्या बंदा है बच्ची तुम्हारी जिम थेरेपिस्ट का. है? ये क्या भाई, कौन है ये ये तो- थेरेपिस्ट? ये जीना लिनेटी वही तो है जीना. जो बंदी तुम्हें बोल रही है कि हाँ तुम पहले कमबैक सोच लो, पहले लिख के जाओ तुम्हें क्या देना है, तुम्हें ठीक है My गाली नहीं करा, therapist is पीट the दे उसको real सामने Gina से. Linetti. She's the real जीना. But एक Yeah. ना जिमी कार करके एक बंदा है, UK कॉमेडियन है वो. He Okay. has ultimate comebacks.
लाइक बहुत अल्टीमेट, लाइक दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. तू एक बार वो जाके देखियो, लाइक यू विल बी लाइक अच्छा चलो कोई यार नेक्स्ट टाइम बताती हूँ उसको. Anyway, okay, going to another question quickly, and we have a game at the end of the, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, we have a game at the end which we'll play with you, जो कि we'll go there very soon. I think चलें क्या, लास्ट क्वेश्चन पूछ के चलते हैं फिर, if you want, is that okay? Yeah, ठीक है. So my question was about your content. You spend so much time in researching, like it shows. Is it true? Do you really spend a lot of time, or is it just you know natural effortless talent कि भाई बस notice किया और निकल गया? Because you know I'll say one thing कि वो जो notice किया और observe किया और एकदम से वो rush आता है ना जो कि भाई कि because I write music sometimes and वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो rush आता है तो वो 1 घंटे में आपके 3 गाने निकल जाते हैं, या फिर 15 मिनट में I can write a whole song and like full banger. And then there are some times where I'm sitting and I'm like नहीं हो रहा नहीं हो रहा, and like I write 4 lines, I'm like no नहीं अच्छी लगी. So is it like but you do it every freaking second day, हर मतलब लिटरली वो लिखना फिर हर हफ्ते पोस्ट फिर उसकी मार्केटिंग के ऊपर अलग ध्यान उसकी. सो व्हेन डू यू हैव टाइम टू रिसर्च एंड हाउ डू यू डू इट? So right now, obviously, मेरे 2 महीने की छुट्टी चल रही थी, समर वेकेशन था, so I was just on reels every single day. तो you know, I used to see कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल अरेबियन नाइट्स चल रहा है या ये गाना चल रहा है, तो obviously there was a lot of research involved. Like I needed to know कि Gen Z कर क्या रहा है यार, मैं खुद Gen Z हूँ, मेरे को इतना नहीं पता, so I had to do that research कि अच्छा this is trending, and you know some things just happen. Like for example, when I did my one first, small sorry I'm interrupting you, but when you say Gen Z क्या कर रहा है, because again इंडिया में जेनजी नहीं कर रहा कुछ, इंडिया में जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है, बट व्हाट जेनजी डू यू लुक टू अमेरिकन जेनजी कि वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, और इज इट एक्चुअल इंडिया के जेनजी को, लाइक व्हाट डू यू? यार आई थिंक इंडिया के जेनजी जस्ट अमेरिकन जेनजी को कॉपी कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो यहाँ इंडियन जेनजी ट्रेंड्स कुछ है नहीं ऑनेस्टली, लाइक ऑल जेनजी ट्रेंड्स या ऑल रील ट्रेंड्स आर जस्ट कमिंग फ्रॉम टिकटॉक, फ्रॉम लाइक आउटसाइड, यू नो. So I just think that whatever we are doing as Gen Z here, it's just a copy of what people are already doing outside. We're just copying the trends, and that's it. But coming back to the question about like research and all, I think obviously there is that research where I have to see कि okay, these are the trends, this is what people are doing. But you know कुछ चीजें बहुत ऐसे suddenly click कर जाती है. Like the other day I was just brushing my teeth and मेरे को ये dialogue आ गया कि आंटी आपका बेटा इंटरनेट पे आपको मम्मी बुलाने की जगह मुझे मम्मी बुलाता है. So you know ये बहुत random डायलॉग मेरे हेड में आ गया, एंड देन आई वाज लाइक फक, इसका तो स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा. सो यू नो आई डोंट गेट कॉन्सेप्ट्स इन माय हेड, लाइक आई डोंट गेट लाइक आइडियाज मैनेजर्स, आई गेट a dialogue. Yeah, I just get a dialogue. I get it, huh? Yeah, I get punchlines in my head and then I write them and I think of a bucket, like a concept around them. So that's how I write scripts. I'll give you one. अभी मेरे को क्या आइडिया था, because I think the same way. अभी ना हम शूट स्टार्ट करने से पहले ना अनमोल अपनी मम्मी को कह रहा है, लाइक अनमोल आवर एडिटर, सो कह रहा है कि ना मम्मी 10 बजे ना इंटरव्यू स्टार्ट है, तो पापा को बोल देना जब दुकान से आएंगे तो शोर नहीं बचाएंगे, ऑल्सो डैडी को भी बोल दो. मैंने कहा 1 सेकंड, डैडी, तेरी मम्मी के डैडी अलग है और पापा अलग है. तो अरे डैडी मैं इसलिए क्योंकि मैं बचपन से दादाजी को डैडी बुलाता हुआ आ रहा हूँ कि एंड इज फाइन. अगर तेरे दादाजी ने खुद बोला था कि मुझे डैडी, मेरे को दादाजी ने खुद बोला, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे तू इंग्लिश बोल, उनको आती नहीं है, ठीक है, तू कहते तू भाई मेरे को, उनको बस एक वर्ड आते डैडी, और भाई मेरा ना ये वाले फोन से वो वाले फोन से कनेक्ट करवा दे. कनेक्ट क्या होता है? कॉल बस. तो वो उनको तब से मेरे को डैडी बोलने की याद आता है, इसलिए. I was taking it like sexually, but ठीक है तूने क्यूट बना दिया उसको. क्यूट है ये, पहली बार ऐसे नॉन सेक्सुअल बात करी है, वो भी सेक्सुअल. हाँ जनरली देख रहा है तू, if you anyone कोई सुनेगा ना जाके पॉडकास्ट, भाई हमेशा कोई नॉर्मल बात चलेगी, कुछ सेक्सुअल बोल देगा. सेक्सुअल बोलता है, पहली बार सेक्सुअल में इसने नॉर्मल कर दिया. आई थिंक इसको एंटी कुछ चलने का है लाइफ में. उल्टा चलते हो ना, रुक जाओ कोई बात नहीं. Okay, let's get to the game. जिस गेम का नाम है Gen Z Word of the Day. Basically हम ना शो में क्या करते थे पहले, दो चश्मिश पॉडकास्ट में, कि हम लोग ना हर कुछ दिनों में ना Gen Z Word of the Week आता था कुछ ना कुछ, क्योंकि हमेशा Gen Z was like putting up new slangs. तो हम एक नया वर्ड लेके आते थे जो हमने सीखा होता था, और फिर हम पूछते थे अपने लाइक गेस्ट से या फिर इवन ऑन द शो विद ईच अदर कि भाई ये बता क्या हो सकता है इसका मतलब. सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स जो कि हमने पहले कर रखे हैं, और वी वांट टू आस्क यू को पक्का आते हैं. और मेरे यहाँ पे शिवम चेक कर रहा है कि तुम्हारा सीक्रेट राइटर कोई है कि तुम नहीं ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ टेस्ट.
So Okay, then I'm so basically ready for it. अनमोल और मेरी 10-10 रुपए की शर्त लगी है कि कितने आते होंगे कितने नहीं आते होंगे. So we'll see कि हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे. ठीक है. Okay, let's start with simple ones. सारे ही simple है. I think you would know most of So them. I have to describe the meaning of the word to you. Yes, I'll tell you a word and then you tell me what does it mean. Feels like a rapid fire यार. मेरा manifestation चल रहा है. हाँ यही तो है. ये this is your coffee with Karan. ये सस्ता है, यहाँ वाउचर नहीं मिलेगा कोई भी, वो जो बैग वो बास्केट मिलती है ना वो कुछ भी नहीं है. नहीं वो हाँ बाद में. बट शशि जब तक तू उतनी बड़ी होगी ना तब तक हम भी काफी करन पहुंच जाएंगे. टेंशन मत ले, हम वहीं पे मिलेंगे दोबारा. But okay, go with salty. What is salty? Salty is, you know, like when somebody's acting really nasty, like, and very mean to you. That's so salty, you know. I hope Yeah, that let's makes go. sense. Yeah. Mani, did you know this? ये तो मेरी Miss जीके की सेशन Ancient चल रहा है, मैं तो Dinosaur? चुप होने वाली हूँ. अब मेरे को वैसे बहुत एंजाइटी हो रही है कि fuck है, तब तो मैं जेंजी जानबूझ के भूलने वाली हूँ. मेरे को लग भी नहीं रहा है ये सब. They are all easy. हमने कोशिश की ज़्यादा हार्ड ना रखें. अच्छा, next one is stan. Stan. स्टैंड. STAN. Stan is when, you know, like worship somebody. Like I stan Abhay Deol. Like you look up to them and you worship them for everything that they are. I actually had a question जो कि मैंने पूछा नहीं. Why Abhay Deol? Like I wanna ask you Okay. that. Okay, I have a theory. आज हाई जाए हाँ. Have you all seen Ranjana? हाँ Yeah. हाँ yes. Beautiful, okay? Like that one right. video wala guy kurta mein ऐसे protective, rebellious and all left wing. And I'm like, huh? So I was a really small kid when that came out, and my mom actually had a huge crush on him when Ranjana came out. And she's like, तूने अभय देओल को देखा कितना hot लगता है? I was like, yeah, तुम्हारी like, मम्मी इसको कितने कौन साल की है भाई, ये क्या चल रहा है यार यहाँ? इसकी मम्मी बहुत My cool है. mom मतलब is very, genuinely. like, cool. Your mom participated with you in like things and stuff. वो third आई किसी fashion show में I think so, right? And then you came third as well. Yeah. My mom came. No, my mom came second and I was the last. मैं 3 लोगों की fashion रैंप में तीसरी आई थी. तो मेरी वो बेइज्जती हो चुकी है. तो at this point मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. But yeah. And your mom came second and she participated with you. That's Yeah, freaking no, cool. she was in a different zone. She was in like ladies वाला, वो Ladies canteen में वाला, होता हाँ. था Only हमारे. mummies वाला I लोग, was in हाँ. the, I was in the teenagers वाला group. तो उसमें बहुत सारी आंटियां थी. उसमें 20 आंटी थी. 20 आंटियों में से थर्ड आई है. मैं 3 लड़कियों में से तीसरी आई थी. तीसरी आई है. Wow. बेइज्जती unlimited. इसलिए मेरे भाई, को इंटरनेट मेरी- पे कोई हेट बॉदर नहीं करता. I've seen everything in life. मैं रियल लाइफ हेट देखा गाइस, कम ऑन. मेरी मम्मी ने मेरे से Yeah. म्यूजिकल चेयर से ज्यादा कुछ नहीं मेरे साथ पार्टिसिपेट किया होगा. यार मेरी मम्मी ने ना मेरे को एक्चुअली 12th में बहुत कूल चीज बताई थी. आई थिंक दैट हैज स्टक विद मी. शी टोल्ड मी कि मेरे बोर्ड्स के पहले बोला था ये कि तुम्हारा लाइफ में मेहनत डिपेंड करता है कि तुम अपना हनीमून कहाँ मनाओगे. अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो वेनिस जाओगे, कम मेहनत करोगे तो वैष्णो देवी जाओगे. सो आई थिंक दैट हैज वो जस्ट मेरी मम्मी तो वैष्णो देवी गई थी. God, what वो the? जितनी बार मेरी मम्मी जितनी मेहनत करती Good है ना advice. वैष्णो देवी आई थिंक वो डिजर्व करती नहीं थी. आंटी को बुलाओ अगले पॉडकास्ट में, आंटी को बुलाओ. I अब think आंटी I है. call her now. she Have you needs to guys give an heard interview. this? मेरी मम्मी लिटरली वैष्णो देवी गई है हनीमून पे दादी के के साथ साथ. ये और तो पापा सारी के साथ. इंडिया बट दादी वाज लाइक मैं भी चलूंगी. चलो. यार हाँ मतलब आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम आवर पेरेंट्स का जनरेशन. हाँ ठीक है. भाई. Fucking But yeah. crazy bro. नहीं तो वेनिस में अबे मनाने हैं दौल, वैष्णो इधर देवी यहाँ में. अबे दौल चल रहा था. Why? No, तो अबे but दौल तो अबे ले दौल जाएगा ना story वेनिस. है. So basically, I thought it was very hot. फिर मेरे डैडी शूज बीच में आ गए. And then I was like, तो इतना hot है यार, इस पे तो होना ही चाहिए. You know that sexy old guy in his late 40s with a beard and जो मेरे को बिल्कुल भाव नहीं देता है. Okay. तो अबे देओल ने भी भाव दिया है अभी. यार he knows that I exist. Like he replies to my comments and he likes. And मैंने उसको DM What? love letters लिखे हुए हैं. So one अबे day when I get देओल, verified, he will actually see that very clearly. एक Waiting for that day. सेकंड लव लेटर्स लिखे हुए हैं लाइक I was like रियल 18 years old, यार. मैंने एक बड़े-बड़े नहीं प्यार से लेटर्स लाइक लेटर्स लिख के यू सेंट इट टू No, हिम no, या like ईमेल टेक्स्ट इंस्टाग्राम पे लाइक DM. प्रॉपर. मैं जेंजी हूँ यार. जेंजी नहीं करते खत हमने बस पंछी- प्यार हाँ, के हमने पत्र. पंछी Oh भेजते. my god, that is crazy. Is it Yeah. possible at all? Can we have like a glimpse of कि क्या letter था like For ever? sure. Let's fucking go. Okay, let's go. Okay, I'll read it. This is super cringe. Okay, if it's cringe, I will No, have to no, bro. cut this out. Abhay Deol. Abhay Deol. What was the first one? What was the first one? कि जो first लंबा message था?
बहुत सारे go for it, messages स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर. होली शिट, स्क्रॉल करने जितने लंबे उसने तेरी बात करी है अभी देओल ने बात करी है मैं वन साइडेड बात कर रहे हैं. ये Okay, so she's I'm a 10 but starting she my iconic double texts. message. I'm starting, okay. Hi, I know this is really stupid, but I love you so much. Why am I creep? Lol, but I am not. I have been loving you since the days of Aisha. I even watched Nanu Ki Janu, and I think that's enough to prove my love for you. Because nobody has seen Nanu Ki Janu. It was हाँ ये a कौन सी horrible- फिल्म है वही exactly, ये nobody लव has seen लेटर है कि रोस्ट है? I have seen Nanu Ki Janu even when nobody has. So if this doesn't prove you that I love you, See, then that's what how I will? was trying to stand out. I was like, Are loving you it. serious? That I was Is this standing how out. you stand out? No, it's not done yet. And I wrote, I know this is pretty crazy, plus you might not even reply, but lately I have been stalking you a lot, and by that I mean a lot and a lot. I honestly love you so much, creepella, question mark. A little, I guess, but he. Oh my god, when I honestly start blushing whenever I listen to your songs and watch your interviews. I admired your whole scene, the nepotism thing, and I admire your choices, and I admire mine too. I hope you are one of my choices. I hope I'm one of your choices. I went full the fault in our stars on him. Full Death simping letter है लिख भाई. दिए मैंने उसपे. And Oh what my was God, the latest हाँ, one? यार, Latest यार. one क्या है? कि भाई सुन यार reply कर I दे just please. like tag him on my stories whenever like I post about him, and latest one तो यार यही I've just been tagging him on my stories कि you and me शादी went like that. उसने ये नहीं बोला बस कर And he मेरी never माँ बस replies. कर And he never No, replies. but the last Send him a text I voice sent note him right was, now कि भाई सुन यार reply कर. Come on, what are you doing? Hi Abhay, Deol, please reply to me. I'm getting some peer pressure. Okay, bye, love you. Motherfucking hell. Oh fuck, I did that. Fuck yeah! Keep it. Don't unsend it, please. Please don't unsend. No, This I'm is not so unsending it. funny. This is still there. नहीं अभय को मैं फोन करता हूँ बोलता हूँ वो रिप्लाई करेगा टेंशन कुछ I टाइम know बाद जब for a नंबर आ fact जाएगा यार I will meet him. But मैंने उसको last text भेजा था. उफ भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको. ओह यार ये लड़का किसी लड़की पे लाइन मार ऐसा बोला उसने ओए होए आशिक तो मैं पहले से थी Oh my god. He's a 10 but Yes. he's in his late 40s. No, I like it. उसे enjoy it. And married. No, No, he's not 25. married. He is married. He's not No, married. he's not married yet. He's just अरे dating हिमानी? Shiloh. Shiloh. Shiloh just is get- this artist. No, Shiloh Shiv Suleiman. वो rumors थे, but he is not gonna get married. What? I thought मेरा he was इंतजार कर married रहा हूँ. already. No, he's not. Oh, कोई बात who नहीं is Shiloh? ऐसे मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि हिमानी का दिल टूटा इस बात पे Like, हाँ, it because feels like मेरा भी that. बहुत long time के लिए वो बंदा क्रश था ना मतलब like चलना अब शादी होगी fuck it. आपने उसके ओए लकी ओए देखी ये क्रश भाई अब हाँ, अब आप मैंने थोड़ा नहीं सब चलो आपने movies नानू देखी की चानू उसकी। वो जो मूवी है वो नहीं देखी मैंने आपने ये भी हाँ। देखी है 1:40 की लास्ट लोकल जो हाँ। लोगों को पता भी नहीं है वो मूवी एग्जिस्ट नहीं यार 1:40 की लास्ट लोकल इज हिज iconic. मोस्ट आइकॉनिक मूवी. Yeah. वो And I think बहुत he चली was the थी. one who introduced dark comedy to Bollywood. उसके पहले कोई नहीं करता था. which movie is this एक 40 की ये डार्क कॉमेडी है. Even they, Oi Lucky Lucky, were Oi not Lucky like dark Lucky. comedy, but these हाँ. movies were way ahead of their time. Yeah. Oh yeah. Oil Lucky Lucky Yeah. is one of my favorite movies as well. It's very funny. Amazing. Okay, let's moving on to the Gen Z game. Now I have an acronym. जिसका acronym basically it's TFW. Do you know what that means? Like WTF is what the fuck obviously, but TFW is TFW. Wait. आता Is है, it? Fashion week. तेरा हाँ. fashion week. No. This one. Oh, wait. and it's a very Twitter term. It's very Twitter term. Like you must know this. आ रहा है नहीं आ रहा है अरे यार. नहीं Take welcome 59. अरे Can I यार. do this quickly? Can I No. do this quickly? No, I don't know what is it. It means the feeling when, and then you tell what the feeling. Oh, Remember wow. now? Fuck, this was so popular on memes also. I know, that's why. Okay, the next one. Okay, this is not used in India at all, so I don't expect you to know this. But if you know, that's fucking great. Finna. Do you know what finna means? It's a very Gen Z. FINNA. Yes. Finally, probably like period, something like that. No. Just taking a So it wild means, guess. no, it means I'm going to.
So like if you say I'm a finna drink some water, Oh, so like really? I'm going to drink Wow. some. Yeah. A lot of black people use it. Like a lot of my black Yeah. friends here, वो लोग use Yeah. करते हैं कि. And then जब मैंने पहली बार सुना, I was like, ये क्या होता है? And then like I felt like an idiot for like 2 minutes. Anyway, moving on. Spilling tea. What does spilling tea mean? Spilling gossip, whatever I've been doing here about creators and Yes. things. Yes, not spilling names though, but all you guys said. Okay, what does this mean? Sheesh. Yeah. Yes. What does it mean though? हिमानी The real fuck? sheesh. I mean, like a Himani- cool, like, you know, like हिमानी when की you शक्ल have देख एक बार. ये क्या कर रहा हूँ इसलिए? होश उड़ I'm just गए. like, ये क्या हुआ ये? ये मतलब ये दर्जी को बता रही है इतनी चीज कर देना. Fuck, that was so funny. But what no, does it mean though? What sheesh is probably like, you know, like when you have that like, you know, fuck, मैंने क्या cool चीज बोल दी, and then I'm just like sheesh. Yeah. Yeah. I'll tell you the background of it. Do you know how it started? No, I don't know. एक ना कोई basketball player था. Okay. क्या हुआ भाई? एक basketball player था. Whenever he shot a basket, वो उसका ये वो था कि वो खुद वो उसके जैसे सेलिब्रेशन सबके एक मूव्स नहीं होते, डांस मूव्स है, किसी का कुछ होता है, तो उसका ऐसा था शीश ऐसे करता था. So and his thing was कि I got ice in my blood because like he's cold, है ना? So he's got ice in his blood, so he goes sheesh. So that was like the whole So thing. cool. We कोई बात नहीं actually, भाई, कोई बात and it's, I can't believe I'm telling you this, but Yeah. I don't know which one, but there's an episode हमारे शो का जिसमें मैंने कम से कम 10 मिनट इसको एक्सप्लेन किया था कि वो कौन था बंदा, क्यों होता था. एंड बिकॉज मैं ना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था, यार वाओ यार क्या लैंग्वेज प्रोग्रेशन है, because this is not what we used to speak before. Anyway, okay, moving on to the next one. But see, like every Snatched. trend is a copy of a copy of a copy. Copy Like of a it copy. wasn't Exactly. like there. Exactly. Yeah. Acha, Shrishti, next one is snatched. Do you know what that means? Snatched. Snatch, like, you know, when like my outfit is looking so fucking amazing, like I've snatched, you know, like fuck. period. देखे जानती मैं Bro, she's insane. You know what is bro. snatched? It is when somebody तुम्हारा phone snatch करके चले गए. चोरी करके मैं That's snatch. snatched. आजकल Chain दिल्ली में snatchers. बहुत होता है रोड दिल्ली पे. वाले हैं ना ये. दिल्ली में सड़कों पे रोज हो रहा है snatch. तिलक नगर में घुस रहे हैं लोग घरों Paris के में अंदर. भी हो रहा है, trust me. Like when I went to हाँ. Paris, they were like, भाई अपना सब कुछ phones, wallets सब अंदर कर. You know, there are girls who literally have this signboard, free hugs. And obviously Indian men go to them, they're like, free hugs मिल रहे हैं अंग्रेज करने को. And then they just like take out your wallet and phones and you don't even notice. So it's, I think Paris ज्यादा खतरनाक है दिल्ली की सड़कों से. Clearly there are no free hugs in the world. There is also No free lunches. there is also a scam जो कि मेरे दोस्त ने बताया था, इजिप्ट में होता है. लोग ना, एंड इफ एनीवनस गोइंग टू इजिप्ट एनी टाइम सून, ये काम आएगा. लोग ना क्या करते हैं, सीटी लेते हैं, विसल नहीं लेते, फुर्र वो वाली, एंड दे पुट इट लाइक वो पीटी सर जैसे अपने गले में, एंड दे प्रिटेंड लाइक देयर समवन ऑफिशियल. तो वो आएंगे आपके पास, कहेंगे यहाँ से जाना, आगे से उधर से जाओ, एंड देन यू गो थ्रू देयर, और वहाँ पे कोई टोल टैक्स या कुछ हो जाता है आपको, एंड लाइक इट्स लाइक इट्स लाइक फेक टोल टैक्स कि भाई यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे एक नई टिकट लो तो आप पिरामिड्स देख सकते हो या तो आप दूसरी चीजें कर सकते हो. So अपने just be भारत careful, के लिए कोई बहुत इज्जत बढ़ गई है अब मेरे दिल में. और मे बी नहीं, क्योंकि ये हमने नया मैंने idea बता दिया, ये नया तो idea नया दिया. आइडिया लोगों को मिल ये गया. नया हम idea लोग दिया. सब सीटी. भाई वो म्यू नहीं होता, वो विसल सेल्स गोइंग अप, स्टोंक्स. ओके, नेक्स्ट वन. I don't know if you know this, but yeet. Do you know what that means? Yeet. Yeet. Y-E-E-T. I've used it in my tweets, but very randomly, so I don't know if that's the correct meaning. But you know, like when I'm Okay. saying yes, but very aggressively. That is how I have used it in that context. It's kind of like that, but more yeet का actual मतलब होता है to throw something. Like I yeeted it. To throw something. Oh. Yeah. I've been using let's slangs go. very incorrectly. Time for a new Gen Z video. Time for a new Gen Z video. Yeah. Okay, next one is very easy. Before I ask you this, Himani, you might know this too, but do you know, like, let me ask Himani, do you know what this means? Thirst trap? Yeah, ये तो thirst जानते trap. ये तो जानते हैं. हाँ. You know this, Srishti, right? Yeah. Himani, do you know? Yeah. मैं तो बताना. पूरे टाइम जब thirsty क्या रहती जब हूँ प्यास तो लगती है, आप डेजर्ट में फंसे होते हो, तो that's thirst and trap. that's my thirst trap जो Amazon ने मुझे बेचा है. एक से for real, are you for real? मतलब सच में Are you ये guys बोल for रहे हो? fucking real? What was the need of all of this word यार? हमारे डिक्शनरी में वैसे कम पन्ने थे, तुम हरामजादों ने 4 और लगा दिए, चूतिए सबके सब.
What was the need really? We are trying to show जैसे अभी कि तूने सृष्टि एक सब वर्ड जानती है. बोला है वो जो पानी पीने वाला, I'm going to drink Thirst water trap. की जगह तूने क्या बोला? I'm going to drink water की जगह. तूने भी एग्जांपल दिया था ना एक कि मेरे कल्ले वो दोस्त वाला बोलते हैं. फिना फिना. I'm finna drink water. हाँ. हाँ, तो इसमें क्या हुआ मतलब गोइंग को रिप्लेस करके बोल फिना देती. बोल दिया तो मतलब what was so good about? तुमने वर्ड कम तो नहीं किया ना? So basically it came from I'm gonna to हाँ. I'm finna. हाँ तो Like, क्या 'cause हुआ? F गौना comes में क्या after कर रहा? गौना में क्या G. खराबी रह गई थी? क्या हो गया था कि तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा था कि गौना और So गौना इसका ऑलरेडी literally meaning बहुत लंबा है, मैं आपको समझा सकता हूँ, but it's like मैं very. ये बोलना चाहूंगी गौना ऑलरेडी गोइंग टू का शॉर्ट है. But Gona Gona. was old Right. as fuck, bro. That was millennial Old as shit. fuck, Now तुम we're Gen अगले Z, में क्या बात है? okay? तुम्हारी मेरे बच्चों को इंग्लिश कौन पढ़ाएगा अगर तुम लोगों ने ये कर रखा है? मेरी तो खराब कर रखी तुमने सारी. Okay, anyway, moving on. Okay, what Yeah. does this mean? CEO. अरे तो उसका तो बता जाओ थर्स्ट का. अच्छा, ये Thirst trap नहीं is पता आपको? basically, हाँ. you know, when you see somebody really hot and you get so thirsty, like you obviously like get so desperate for Like, them. So get that's desperate, a thirst. हाँ. And thirst trap is when somebody posts a very hot picture or a video of themselves. That's like a thirst trap. Oh my gosh. Oh my god. Nice. Dinosaur. Okay. Next one. CEO. Do you know what that means? CEO. CEO of a company like that. But in Gen Z. CEO, Dream. like a girl boss probably. Somebody who's like killing it right now. Something slaying. like Yeah. when you do something really good or like really cool and Yeah. someone goes, I'm the "Yo, CEO." you're the CEO of this. Like you were the CEO Yeah. of Instagram, just say for example, something Like like that. girl Okay. boss, that nails emoji, painting nails emoji. Right. Okay. Next one is cap or like no cap. No cap, like not lying. Not lying. That's Yeah. true. Next one is slaps. Yo, this Slaps, like this is a hard fact. Like this hits pretty hard, you know, like this thing Right. slaps. It's too good like that. ये तो मैं भी नहीं Right, जानता यार. I just thought of a very funny one. ये हमने लिखा नहीं हुआ, but I'll ask you this. You know what Zaddy is? Zaddy, it's somewhere close to daddy, but Yeah, I yeah, don't yeah. know like that. But for Gen Z, like that's for Gen Z. कि Gen Z के जो daddies होते हैं वो Zaddies बोलते हैं उनको. Really. मुझे Like लगा basically जो कि बच्चे अपने आप को वो नहीं होते कि 14 साल के बच्चे Like एक दूसरे को बोलते 19-year-olds are calling themselves daddy, bro. हैं. What? Yes, not English- 19, 16. हैं So ये 1925 Yeah, साल के yeah. लौंडे अपने आप को ज़ैडी बुलाते ताकि लगे हाँ. कि बंगले वाला नहीं है. मतलब Why मुझे I लगा asked कि you this? जैडी का ये बोलेगा कि जहर डैडी जो बहुत ही जहर आदमी हो दैट इज जैडी. भाई but एक सबसे funny जो मैंने कुछ दिनों पहले देखा Vladdy. Do you guys know what Vladdy is? Villa Daddy. VLADDY. विला डैडी. No, you will मतलब भाई दिमाग फटने वाला है, अभी रुक जाओ. Daddy Do who you know, Shristi? vlogs. Daddy who vlogs. No, I'm no, just no, taking no, a no. wild guess. No. Let me tell you, and this is gonna sound so weird, but यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी कुछ टाइम पहले जो शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है. उस टाइम पे ना अमेरिकन किड्स वर ट्राइंग टू काम him down. Who? Vladimir Putin. तो उसको सब बोलते थे, Vladdy, can you please not do this? What That the is fuck? Vladimir Putin is my daddy is Vladdy. That is Oh my what God, Vladdy is. fuck. That's crazy. I know. बहुत crazy, बहुत crazy. Man, I love Okay. this generation. हमारे पास 4 और Gen Z words बचे हैं and then we have a little छोटी सी और game. वो Yeah, बहुत yeah. छोटी सी है तो वो खत्म हो Yeah, जाएगी. Bussin. You know what bussin is? It's very Bus. easy also. अब इस पे गाना भी बना था. Bussin. Bussin. I don't know. I like Bussin. probably like showing off your ass and feeling super hot and all. Is it like that? No, it's ये रील का basically a बोल quirk. रील का बोल हाँ? रही है वो बस से वो तो नहीं. रील Yeah. का ट्रेंड बता रही है. Bussin. Yeah. हाँ. नहीं, so that was just a dance. Bussing का actual मतलब होता है a quirky word to use when you taste something delicious. And now you can relate what's the अच्छा. deliciousness in the. Oh. Damn. पीछे बल्ब जला एक. These kids wilding. Okay, मेरे को अब next Gen one Z is फील नहीं हो रहा है. Like और कितनी अभी generations आ रुक चुकी हैं. जब तक ये पॉडकास्ट निकलेंगे क्योंकि ये थर्सडे को रिलीज होगा 5:30 बजे तब तक बना Okay. दे कुछ ना कुछ ऐसा कि लोगों को लगे यार इसको तो पता था. Okay, next one is sus. What is sus? Suspicious. sus है. सस्ता. मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर ये मिलेनियल टर्म्स होते तो ये क्या होते.
हिमानी is like bro भैया थोड़ा सस लगा दो इसको. भैया थोड़ा सस्ता कर दो प्लीज यार, क्योंकि आजकल पूरे But वर्ड that's बोलना actually ट्रेंड a में नहीं very है. cool idea, you know, like millennials using Gen Z words in their lingos. Yeah. So cool. लो एक और बल्ब जला, एक और रील आएगी मंडे को आ रही है एक और. Okay, next three are like my favorite ones, जो कि मैं Yeah. खुद भी अभी कुछ टाइम पहले यूज करना स्टार्ट किए इनको. एंड इन्हीं पे हमारी शर्त लगी है मेरी और अनमोल की. So the first one is guap. Do you know what guap is? GUAP. ग्रो अप, ऐसा लगता है मुझे उसका शॉर्ट नहीं लग रहा है ये ग्वाप. Acha, give me some hints for this, please. अरे यार Okay, I'll give you hints. So guap is can be tangible or intangible. You can have a lot of guap but not feel you have enough. Oh, That is guap. the mo- Gossip, is You know- it that? No. जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया था उससे तो मुझे भी लगा. चाहिए नहीं. You can have a lot, yet you can't have a lot. Is it like pussy? Oh my No. fucking lord. No. How is that? Yeah. No. Okay. Okay. I give up, I don't know. ठीक रुक है. जा, So एक- guap एक- मैं means सृष्टि को मैसेज करता हूँ, एक सेकंड फिर पता है कि मेरे पैसे भाई डूबने नहीं से- ओ हेलो भाई 10 रुपए हार गया तू, ठीक है. But guap basically means money. Lots of money. जब Guap ये means सब हंस lots रहे of थे, money. जब ये सब हंस रहे थे, मैं ये कर रहा हूँ सृष्टि को, और सृष्टि खुद हंस रही है. मैं कहा यार तू देख तो ले. तब तो लगता है वो इंटरव्यू में फोन देख रही होगी कि मनी हो ये क्या कर रहा है. Okay. गंदे इशारे. Next one is drip. ये तो Drip is, you know, when it hits very, like whenever you're wearing something really cool, you have your own style and all. Like sneaker heads बोलते हैं ना, this is my drip. हाँ That. Right. Yeah. That's equal true. हो गया, Okay. equal हो गया. Yes. Perfect. And the last one is whip. क्रीम. Whip cream. Okay. हाँ, मेरे को यार कौन But बनेगा actually, करोड़पति do you guys लक्ष्मी know what लेकर cream आया? means? मतलब, do you guys know what? Yeah. Okay. Yeah. You Can I don't say have it? to Okay. say it. Wait, Imani, do you know what cream means? मुझे पॉडकास्ट से हटा दो यार गाइस, मेरी नींद भी आ रही है. क्या क्रीम नहीं क्या कुकी क्रीम. Cream to cream means to. ये मेरी अच्छी चीजों के अच्छे वर्ड्स मत खराब करो तुम लोग. क्या टू ये- क्रीम का क्या? ये मेरे को भी नहीं पता. 18 plus को information. हाँ, ये अच्छा, अगले ठीक है. एपिसोड में. मुझे ये अगले नहीं एपिसोड पता में what is cream पे. that, I don't know. So मेरे घर वाले whip. देखते हैं. Yeah, obviously, So, I okay. don't know these words. Whip मतलब बता शिष्टि, whip मतलब. That's my Wet ass pussy. No, That's wap. wap. Wait. That's wap. Whip. Work in progress. Work in progress. No, it's WHIP. That's my whip. It's a whip. वर्क हैपेंस इन प्रोग्रेस. That's like my, I don't know, like, style. I'm No. not Gen Z enough. Okay. What does it mean? Okay. It means a vehicle or a car. So like I'm gonna pull up on my whip. जैसे rap songs में सुना होगा. Oh my I'm gonna pull I'm up. feeling like Himani right now on this thing. Oh no, you are not, honey. You are not feeling like me. Trust me. Actually, I also remember one more. Do you guys know what crib is? Crib. Yeah, like crying for something, CRIB. you know? Crying Huh? for something, cribbing for something. No. Crib Or means is- a house. हाँ कि तो I'm that gonna way pull up ना. on your crib with my whip Oh. with some guap. ये कौन सी इंग्लिश है यार? Sir, this is ओ भाई। Gen Z. ये जो बताना कि- चाहता है कि God. इसने कनाडा हाँ, की वन ये- साइडेड हाँ, फ्लाइट ली है. कनाडा ही है, ये ये कनाडा बेसिकली ये से बता है। रहा है बेसिकली कि Canada की side ओरिजिनल flat ली है कनाडा में नॉन पंजाबी एरिया में रह रहा है ये. हाँ। ये बेसिकली ये बता रहा है. नॉन देसी एरिया से दूर रहता I है. actually do that. I actually do that. Okay, last. So the next game is called She's a dash but जो मैं कुछ बोलूँगा and then you have to say कि do you think she's a 10 or not. ठीक है ना? जिसमें Okay. बोलूँगा she's a 10 but she's controlling. So you can be like she's a 1 or you Yeah. could be like she's a 100. He's ठीक है? a- Got it. Yeah. He हाँ तो I'll do it with he's a ठीक है. So we can think of anyone, Abhay Deol, your boyfriend, anyone you want. It's a Also, bit I only. Abhay Deol only. हाँ. अभी उसके साथ पक्का नहीं, अभय वाला पक्का है. Yeah, Okay, obviously. let's go with this. He's a 10, but he's confusing. He is a 2. Okay. Yeah. He's a 10, but he's obsessed with astrology.
He's in 11. Okay. You did a video today, or with not today, Yeah, like किया तो पहले होगा, but आज release हुआ Leo and Yeah. Sagittarius का था ना वो? Yeah. I saw that. Like I was seeing it for research कि भाई इसमें भी कुछ होगा, but it was like so branded, तो मेरे को कुछ मिला नहीं except हाँ, कि like you are it an was for introvert. like, since I am also none of those signs, तो मेरे लिए इतना कुछ Right. insightful हाँ, नहीं था. मेरे को but ये yeah. पूछना था कि फिर क्यों करवाया है, मतलब सीधा उससे कराता है ना, February वाला जो Aries आता है, right? Because I'm I think so. sassy. I mean, they just want to like do this series with me, and they thought like I could give out advices in a very sassy way, so that's why they got me on board. Right. Okay. Perfect. Yes. Perfect. Okay. He's a 10, but he has an OnlyFans. Okay. He's a 5. I'll give him a 5. Okay. Yeah. He's a 10, but he posts photos shot with magazines nude and has FIRs on his name. Ranveer Singh. He's a fucking 20. He's a 20. Let's go. Let's go. Okay. He's a 10, but he's bad at texting. Oh no, he's a 0. Oh. Nice. He's a 10, but he only wants to talk on a phone call. No texting. Like. He's an 8. Since I'm also a call person. Okay. Okay. Yeah. Okay. He's a 10, but he shops online whenever he's sad. He's me. He's also an He's a 10, but he has a very high pitched voice. He's Karan Johar. But is he a 10 still? Yeah, he's नहीं करण जोहर के शो में जाना है इसको. हाँ, ये करण क्या जौहर- बोलेंगे? इज्जत रखनी पड़ेगी यार थोड़ी. खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बोल के. वही तो दादी इज्जत रखनी पड़ेगी थोड़ी. So yeah, he's like a 6. Okay. I'll call him a 6. 6, okay. He's a 10, but he's same height as you or shorter than you? Dude, I'm the shortest person, so he's definitely like a 0 then, because I am 5 feet. Oh shit, so he has to be Yeah, taller. I'm obsessed with tall guys. Okay. He's a 10, but he has anger issues. He's a -2. कभी Let's go. Okay. He's a 10, but he has mommy issues. अरे भाई Well, he's a 6. तो He's a 6. Yeah. माशाल्लाह. sense. I will act like the mommy for him. Let's both be toxic for each other. I have daddy issues, you have mommy issues. Okay. He's a 10, but he's a vegetarian. He's a 10. I'm also He's a vegetarian. Yeah. Oh wow, we have 3 vegetarians here. Yeah, no, I recently turned a vegan. Not a vegan, but a vegetarian. Vegan. Like, you used to eat chicken before and you stopped? Yeah. मेरे को अपने Good so decision. my dog's name is Zara. तो मेरे को Zara की टांगों की याद आ गई चिकन खाते हुए एक दिन. And I was like, shit, no. So I Like stopped. खाते हुए कि याद आ गई कि ओ वो भी कितनी टेस्ट नहीं है. हाँ, no, like उसकी भी टांगे हैं, इस चिकन की भी टांगे होती, इसमें भी जान होती. So then I was just like, Oh my no. God. भाई लोगों का That was नॉर्मल just very रीजन होता है. sad. नॉर्मल रीजन होता है चिकन को कट तो ये हाँ, I swear to God, इसको अपने कुत्ते की आ गई याद यार. मेरे को हर जानवर को देख के इतनी मासूमियत आ जाती है ना. गाय को भी मैं देखती हूँ. मेरा फ्यूचर सपना है टू रिटायर एट लाइक 35 और 3-4 गाय के साथ में शिमला में छोटा सा घर लेके बस जाऊं एंड Oh. रिटायरिंग फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑल. If I don't get And it this into is like, make 35. it into acting. Yeah, unless This I don't make it into acting, then. सोच फिर तू करण जौहर के शो पे जा रही है 2 गाय लेके कि भैया ये बाहर पार्क कर दो, यहाँ पे बांध दो थोड़े से. And then एक you को मेरे go साथ in. रैपिड फायर के लिए बैठा दो, थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता रहेगा. Wow. Okay. He's a 1, but he's very nice to you. Everyone's very nice to me. He's still a 10. Okay. Yeah. He's a 4, like by his looks, Yeah. but he cooks good. He's a 10 then. Okay. Yeah. Okay. खाना खाना है बेटा. मेरे को रेड सॉस पास्ता कोई मस्त खिला देना तो वो संजीव कपूर से भी ऊपर मेरे लिए. Okay. Shishti, he's a 10, but he's dumb. He's a 1. Okay. You want like someone who can like think. Yeah, and smart. somebody very smart and funny for sure. Okay, perfect. He's a 10, but he's a Disney adult, if you know what I mean. He's a 2. Oh, I'll give him 2 points for cute eyes and all. shit. Okay, this you might relate to this one. He's a
Okay, I don't know if you might relate to this one. Yeah. He's a 9, but he's Yeah. a micro celebrity on the internet. Okay, he's still a 9 then. Okay. Yeah. ये तो ये pause कर That लिया ना? वो जो pause था ना, I was like, okay. यहाँ तो बोलना पड़ेगा, यहाँ तो बोलना पड़ेगा। मैं तो मैक्रो हूँ तो मतलब तो उसको तो- ढंग से तो एक्ट करना पड़ेगा। उसको तो एटलीस्ट वेरीफाइड होना चाहिए. Exactly. Okay, he's a 8. He's an 8 actually. He's an 8, but he counts all his calories throughout the day. He's a Every 10. day. No, he's a 2. He's a 2. He's a 2 because भाई Yeah. उनके साथ क्या ही खाने जाओगे? Okay, Yeah, he's a 6, but he has his own company. He has his own company as in like his own group of friends. No, like like Microsoft or काम उसका खुद का Oh, काम है company. he's a 20. Oh, you're like okay, perfect. Yeah, money's. Okay, he's a 10, but he talks too much. No, only I can talk too much. He's a 1 then. Okay. Yeah. Last one. He's a 10, but he claps when the aeroplane lands. He's a -10. Oh my god. Bro, that was very fun, Shrishti. Thank you so much for doing this. Oh my god. Thank you so much मेरा for बहुत having मजा आया. me. मुझे भी Of बहुत course. मजा आया. Like I'm looking forward to my Monday now because this was not a depressive Sunday. Luckily. Let's go. हाँ वैसे पता है बहुत बार पॉडकास्ट में ना like people come in and they expect कि यार बहुत deep जाएगा, you know वैसी वाली बातें होंगी, मेरे बारे में पूछा जाएगा. It's keeping it fun, you know. No one does it. India में ना वो comedy का ना वो people don't do it in that way. Podcast India में में like सिर्फ the beer whole- biceps चलता है, you know, like motivation bro, hustle कर bro, fuck your hustle kar sleep. bro, don't fap at all ever in your whole life. Listen like to it's just Sadhguru. Sadhguru सुनो. This is not that kind of podcast. ये बिल्कुल Yeah. we're trying to do something that no one else is doing. Just Yeah. like how you are trying to do something in India that no one else is doing, and we really appreciate you for doing it. Thank you. And this was the first time on the show we did not have an influencer. We've had people with million followers before, but this time we had a celebrity on. Oh Which my is God. oh my god, I can just feel it. She's sending me celebrity vibes. Yeah, I'm already practicing like my haircut for candid photos. Yeah, of course, bro. देखो बाहर जब वो पेपराजीज आएंगे तो देखो What's up, Yeah, viral guys? भैया थोड़ा दूर से लो वैसे ना. लो क्या ना. बार आप कॉलिंग से तो जा रही हूँ. What is this? ये तो एयरपोर्ट लोग भी डिसाइड करके बैठी होगी पक्का. Do you have you decided what your airport? Really? Of course. Obviously. Yeah. Yeah, let's go. Yeah. Would you clap at the end of the flight? कि भाई thank you. See, if the pilot is hot, why not? He's a 10, but he flies. Yeah. Shrishti, thank you so much for coming again. This is my another thank you to you. Thank you so much, everybody, for listening to Shrishti and us talk for the last 1 hour. I hope everybody enjoyed it. Thank you so much for tuning in, and we will see you again next week with Himani and Anmol. And Shrishti को आप जाके follow कर सकते हो on Instagram and on Twitter. Do you wanna plug in your Twitter account and Instagram account? Yes, please write the correct name of Srishti. It's SRISHTIGARGG. I go by GG. both. GG. Yeah, because there are too many just single G Srishti girls on the internet. I'm like, bro, you're not even the OG, please. Of course. Yeah. तुमने देखा था मैं वो intro में भी मैंने बोला था the real G. Yeah, She's DOGG yeah. जो है I like GARGG. The real G. She's the real one, guys. No, but I Go also follow want to her. be really like grateful for this whole thing. I'm really glad I came here as like a speaker, and yeah, it's just so much fun to meet new people, and you guys are crazy fun. And I was very nervous, like how I mentioned, because I had no idea how this is gonna be like, but it Right. genuinely felt like I was just talking to a bunch of friends. So thank you for doing that. It was great. That And I was really the hope a mission. lot of people listen to this. I hope I hope so too. And they'll get to know a lot more about you, Shrishti. And guys, if you liked her, because we certainly did, प्लीज गो फॉलो हर एंड कंटेंट देखो भाई. एक्चुअली में बहुत फनी कंटेंट है और बहुत सारे जोक्स तुमको समझ आएंगे इस पॉडकास्ट के अगर तुम एक्चुअली में थोड़ा सा कंटेंट देखोगे या फिर फॉलो हर इवन अ लिटिल बिट यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द जोक्स जो कि पॉडकास्ट में थे. सो गाइस गो डू दैट एंड पीस आउट. Thank you so much. Yay, thank you. Bye bye. Bye. Thank you so much for watching, guys.
Please make sure you like, subscribe and share this content with your friends. And if you liked it, please अपनी stories पे share करो, Instagram पे share करो. We're trying to become big. आपको जैसे भी मैंने podcast में बताया, we want to become करण जौहर के level पे हमको अपना coffee with करण करना है. तो दो चश्मिश podcast with शिवम and हिमानी अनमोल, ये करना जो है ना, ये भाई ये वहाँ तक लेके जाओ हमको, ठीक है ना? तो guys, go share it on your profile. Help us out in this. And thank you so much for watching the entire show. And we'll see you again next week. दो चश्मिश पॉडकास्ट.